छड़ जाएगा। थैंक यू। ब्रेकफास्ट करो आप लोग।
की जो वीडियो बनाई हुई है वो कहाँ है? वो तो दिख नहीं रही है। सर वो पता क्या हुआ, बच्चों ने की थी ना, प्राइवेट हो गई थी, तभी मैंने वो किसी करे अभी से मैं वो देखता हूँ वीडियो बनाई थी, दिख नहीं रही है गई। कोई पब्लिक कर दी आप दिख से अब करती तो वैसे कहीं आगे देखा उसकी प्राइवेट भी है लाइव स्ट्रीम। मैं घर पे लगा दिखा मैं बोला कि वीडियो नहीं खुल रही है। हाँ वो मैंने अभी ऐसे डोंट इस रूम से खराब हो जाएगा। यस सर हाँ जी
इंफ्रास्ट्रक्चर में ना पूरा प्रॉपर उसमें मतलब स्टैंडर्ड जो है उसका ठीक रहता है ना। जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं ना, दो बच्चे को बैठ ये हमने दो बच्चे हेल्दी आके उनकी चढ़ा के देखा कि दो बंदे चढ़ा के ऊपर से आ रहा है एक से आ रहा है तो कल चलो ना के बैग बिल्कुल हाथ बढ़ जाते हैं बन जाते हैं। हाँ जी कई बार बिल्कुल सर हाँ कई मुद्दा मारा हाँ हाँ They always remember that they have visited Minerva College. Here's the movement of the left lightning and Saraswati Vandana.
Thank you. I would request the two chief guests and the dignitaries, please take the seats on dice, please sir. We have already mentioned the name, all the lecturers and the dignitaries for the dice. वो विकास ला रहे So ladies and gentlemen, I will change my wording today for the welcome because usually I use word warm, but because Indora is already very hot. So it is very fresh and healthy. Good morning, one and all present here. I am Indora, Assistant Professor, Computer Science and AI. It is with great pleasure and deep honor that I extend my warm and heartfelt welcome to our esteemed guests, dignitaries and intellectuals present here. I would like to request our honorable chief guest of this second day National Science Conference to kindly grant me permission to start today's event, sir. Thank you, sir. फोटो भेजो। So ladies and gentlemen, today is a very big day for Hip Science Congress Association because it is the foundation day for FSCA. So I would like to call Professor Deepak Pathani on dais to say some words and also take his seat on the dais. Please put your hands together for Professor Pathani. Thank you. नमस्ते सभी को मेरी तरफ से On the dais, Professor please. The ex-former chairman of Punjab Constitutional Board for Patel Saab, chairman of these institutions. Principal Sahab, Dr. Rakhi, Dr. Banyal, of the guys, Dr. Pavan, scientist, HFI Simla, Professor Bachan Chauhan, Director of Central University of Jammu, Professor Rajesh Zandeen, Planning or Dean Student Welfare, Sardar Patel University Mandi, Dr. Sunil, Expo Simla, Dr. Hitesh Chauhan, Expo Simla, Dr. Verma, guest of this our association and Associate Dean, Academic Affairs, Sardar Patel University Mandi, Dr. Sarita, she is my wife, other delegates, scholars, students, and member of the Science Congress Association. Really, this is a matter of pride for me all. जैसे मैंने कल थोड़ा सा ब्रीफ किया था, बाजार टाइम की कमी भी है, आज जब भी सबको जाना है समाप्ति तक जा रहे हैं तो हमने 2012 में एक ऐसी सोसाइटी के लिए सोचा, उससे पहले 2-3 महीने हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसमें सबसे पहले डॉक्टर राजेश, डॉक्टर सुनील,
डॉक्टर वर्मा, हम लगभग सभी लोग 5-9 में हुआ करते थे। 16 में थॉट आया क्यों ना कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी सोसाइटी हो जो साइंस के बारे में सोचे, जो पर्यावरण के बारे में सोचे, जो यंग यूथ के बारे में सोचे कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे बच्चे कुछ सीखें या जो उनके इनोवेटिव आइडिया वो बाहर आए ताकि उनके ऊपर विचार किया जाए और वो एक अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ अच्छे सोशल वर्कर भी बने ताकि इस देश की सेवा कर पाए। तो इस इनिशिएटिव को लेकर हमने आगे बढ़ना शुरू किया। कई लोगों से शिमला में डिस्कस किया, शिमला यूनिवर्सिटी मंडी यूनिवर्सिटी हुआ करती शिमला ही थी, प्रोफेसर भागचंद जी वहाँ से अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल में हुआ करते थे तो उनसे भी डिस्कस किया। तो ऑल एग्रीड कि हम साथ हैं, तभी से हम लोग साथ हैं। 14 सालों से लंबा सफर आप जो 15-20 लोग हैं प्लानिंग करने में कैसे काम करना आगे बढ़ाना इकट्ठे चले हुए हैं, मतलब एक मनभेद का भी नहीं हुआ है। कई लोग आएंगे, कोई आगे चले भी गए, सिस्टम है तो लोग आएंगे जाएंगे जैसे होता है, तो उसका अपना पार्ट है, कोई डाउन करके जाते हैं। मुझे भी लगातार मैं 14 साल से इसका अध्यक्ष हूँ। 3 बार हमारे इलेक्शन हुए, एक बार वोटिंग हुई, 2 बार अनअपोज्ड मुझे प्रेसिडेंट का दायित्व दिया गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मुझे विश्वास सब ने मेरे ऊपर रखा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ खड़ा उतर के जाऊँ। आगे भी 2 साल में इलेक्शन होंगे तो मैं प्रधानमंत्री से भी नया चेहरा है जो कि काम आगे इस काम को बढ़ाए, क्योंकि टाइम हर चीज की सेवा होती है, हर चीज से लिमिट होती है, तो उसमें और आगे बढ़ाए आगे बढ़ाए और काम करेंगे। तो मैं चीफ गेस्ट को बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स ऐसे बदलाव की शुरुआत की प्रदेश में, जैसे रिमोट एरिया में इंदौर में, शिमला के अपर एरिया में जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता था, वहाँ तक हमारी टीम डॉक्टर राजेश, मैं, वीरेंद्र प्रताप जी और जगदीप वर्मा जी गए। और 4-5 दिन हम लोग वहाँ पे रहे, लगभग स्कूलों में गए, लोगों से मिले। फंडिंग किसी से अपने पैसे पे गए, तो छुट्टियाँ होती थी 4-5 लोग इकट्ठे होकर चलो ये स्कूलों में चलते बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं। और इसके साथ साथ हमने लगभग 4 स्कूल ऐसे जो अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करने का मतलब हमने कम से कम लैब का सामान दिया, जिस स्कूल में फर्नीचर की कमी को पूरा किया, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उसके हिसाब से उनकी हेल्प की। और बीच बीच में कभी साल में का त्योहार हमारे टैक्स करने के लिए भी जाते हैं। दूसरा इनिशिएटिव जैसे हमने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिया, ये इंस्पायर हिमाचल प्रदेश के आप बच्चों का लगाती है, उसको भी स्पॉन्सर किया हमने। एक इंस्पायर के सोलर में था, उसमें हमने उसको 50,000 स्पॉन्सर किया ताकि जो बच्चे को रिवार्ड दिए जाए उस पैसे से। पैसा रिसोर्सेज कोई नहीं हमारे पास, हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, या कभी भी कॉन्फ्रेंस में फंडिंग आती है, ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं फंडिंग के लिए, तो उसी से हमारा काम चल रहा है और अच्छे चल रहा है। और जैसे कि हमारी हमने लगभग 12 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा दी हैं पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और कम से कम 15-20 जो कॉन्फ्रेंसेस के हमने स्पॉन्सर किए हैं, हमने 50,000 दिया, 10,000 दिया, 60,000 दिया, इस तरह से रिक्वायरमेंट के साथ में। पर्पज ये है कि किस तरह से हम किसी मीडियम से साइंस में एक्सप्लोर कर पाए, आगे कैसे और बढ़ना है। हमारी प्लानिंग और भी है, हमारी बैठक होती रहती है बीच में, तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने लिए बड़ा काम करते हैं, बड़ा घर बना जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन सोसाइटी जिसने सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, इसका थॉट इस एज में आज बच्चे हमारे साथ शामिल करके होता है। हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया तो उसके हमारा कितना जरूरी है। हम सोसाइटी के लिए सोचेंगे, कुछ देने की आदत आएंगे, तभी हम कुछ दे पाएंगे। तो इस स्टेज में कुछ ना कुछ जो भी आप कर सकते हैं, जो भी कि पैसा देके कुछ किसी पे उधार कर सकते हैं, हम किसी को बढ़ा के कर सकते हैं, किसी की हेल्प करके कर सकते हैं, और बहुत लोग देख सकते हैं। और लोगों को, समाज को हमारी जरूरत है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कुछ एक्सपोजर है, उसकी समाज को जरूरत है। क्योंकि हमारा देश की आपको पता है कि लगभग पॉपुलेशन
लगभग 150 करोड़ है, और 150 करोड़ में से लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन आज की डेट में जा रहा है। और इतने लोगों को कितना स्कॉलरशिप जा रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लग रहा है। तो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा हेल्प करने की जरूरत है। कोई बड़ा जो पढ़े लिखने का फायदा है वो तभी होगा जब हम अपनी पढ़ाई करेंगे, किसी की डेवलपमेंट के लिए या किसी हेल्प के लिए करेंगे। तो मेरा यही आग्रह है आपका सबसे आज के दिन, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। 14 साल का सफर हमने तय किया और हर साल हमारी कुछ स्टाफ एक्टिविटीज होती रहती हैं, किसी भी फॉर्म में चलती रहती है। आप थोड़ा सा बढ़ाने की और कोशिश कर रहे हैं, और नए लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं वेलकम करता जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो भी हमारे किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ चलना चाहता है, उसका स्वागत है। और किसी का कोई और आइडिया है जो जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं, उसकी हेल्प करेंगे। तो इसके ज्यादा ना बोलता हूँ, मैं हमारे जो सहयोगी हैं डॉक्टर चौहान जी, डॉक्टर सुनील जी जनरल सेक्रेटरी हमारे राकेश जी और सुनील जी हैं आज जो जनरल सेक्रेटरी हमारे पास, और उपाध्यक्ष डॉक्टर सीताराम जी जो नहीं है आज, और कैशियर का काम जो जुड़ा लेंगे हमारे साथ जगदीप वर्मा जी है, उन्हें पूरा 1-1 रुपए का साथ आज वर्मा जी कह सकते हैं कि काम पैसा उन्हें कर सकते। जो हमारा मेंबर है कभी पूछ सकता है कि हमारा क्या कितना पैसा कहाँ से कितना कहाँ गया, और एक हर साल का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है पूरा, क्योंकि हमने समाज के लिए करना है, समाज के द्वारा ही होगा, लेकिन किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कितना क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं। तो एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, और डॉक्टर वर्मा के पास पूरा रिकॉर्ड है जो हम काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, अपने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं जो कि मेरा साथ दिया, साथ मिलके चले और आगे भी चलेंगे तो चल सकते हैं, और सभी और मेंबर का भी इस माध्यम से इस प्लेटफॉर्म में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि मेंबर बने और किसी न किसी तरीके से हमारे साथ चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। Thank you so much, sir, to tell us about the association, and undoubtedly this seems like. तो आज इस बड़े दिन में जो हमारे लिए खुशी का दिन है, तो मिठाई लड्डू हमारी तरफ से सबको जस्ट शेयर द सेलिब्रेशन जो हमें पास और आते हैं सारी टीम को बहुत धन्यवाद। As I told you earlier, we are also putting it in social media channels. You can witness it a lot in YouTube and Facebook channel of Minerva of colleges. चलो देखो रह गया मुंह मिठा खाने वाला, देखो कौन रह गया, किधर गया रखे सबको बांट दो, बेटा इधर ले आओ, दे डॉक्टर साहब को।
undoubtedly your association is doing very good, not in even the urban area, but in the remote area also where facilities are very less. And if you are approaching the rural areas and remote areas and providing some facilities to the students, then it is very good. It is very good job you are doing, sir, and your association is doing. So ladies and gentlemen, please put your hands together and give a big round of applause to this association. And such kind of association are very necessary in the society. For that, our students and the QSS students who are very good in study, but with the lack of facilities, they are not doing good in the academics. They people are doing good because of these people. Thank you very much, sir. Now, I would like to invite our students to kindly come forward for the wedding ceremony. Let us extend a warm welcome to esteemed dignitaries seated on the dais whose gracious presence enriches the occasion. Your clap shot should not be, stop. It also be balancing your BP. तो ओकेजन के लिए नहीं, अपने बीपी के लिए क्लैप कर दीजिए। इसी बहाने से आपका बीपी को नॉर्मल रहेगा। Respected Chief Guest, sir, I would like to tell you, since yesterday, we are streaming this national conference, today's national conference, in our social media channel also. Now, I would like to request our working principal, sir, for the facilitation ceremony. And in that contest, I would like to request our working principal, sir, first of all, facilitate our today's chief guest, Professor A. Pivesh. One more time, please. Professor H.S. Kalina. Professor Rakesh Kumar. By moving forward, Professor
Verma. Dr. Jagdeep Verma, SPU Mandi. Dr. Sarita Pathania. Dr. Nitesh Kumar, SPU Shimla. Dr. Bhagwati Prasad. Dr. Bhagwati Prasad. Last but not the least, Jagmohan Singh, Chairman Indo Global. Thank you, sir. Thank you very much. So moving forward, now I would like to request our working principal, Dr. Prashant Kumar, please come on the dais for the welcome address, sir. Please give a big round of applause to our working principal. In this third technical session, I, Dr. Prashant Kumar, welcome you all in this
intellectual exercise under theme and title Sustainable Development 21st Century Challenges and Opportunities. In continuation to the earlier two technical sessions, today's session is graced by our worthy chief guest, Professor Adarsh Palmeji, former chairman, Pollution Control Board, Punjab. I request you to welcome him with a huge round of applause. जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मुख्य अतिथि महोदय, समस्त मिनर्वा परिवार की ओर से, फैकल्टी की ओर से, अपने स्टूडेंट्स की ओर से, हेल्थ साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की ओर से इस मंच पर, इस प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर पवन राणा जी, साइंटिस्ट HFRI शिमला। सर, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के हमारे अभिव्यक्ति डॉक्टर HS बनियाल जी एज अ रिसोर्स पर्सन आज यहाँ से डेलीब्रेट करेंगे। सर, आज की इस ओकेजन पे आपका स्वागत करता हूँ, फॉर्मली अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर भागचंद चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से। सर, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इसके साथ HSC के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपक पठानिया जी मंच पर आसीन हैं। कल से और अब तक निरंतर इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुली कंक्लूड करने में इनकी तरफ से जो मोटिवेशन, जो डायरेक्शन रेंडर हुई हैं, उनके लिए हम आपके हार्दिक धन्यवादी रहेंगे सर। Along with that, the Vice President of HSCA, respected Professor Rajesh Kumar Sharma ji, is among us. Sir, I welcome you in this premises. Dr. Sunil Kumar ji, Dr. Sunil Kumar Sharma from Himachal Pradesh University, Dr. Rakesh Kumar ji जो मंच पर आसीन हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से, डॉक्टर सरिता पठानिया हमारे बीच उपस्थित हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से, डॉक्टर जगदीप वर्मा जी, डॉक्टर भगवती प्रसाद जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दबाउन से एसोसिएट प्रोफेसर हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री जगमोहन सिंह जी, बहुत दूर से हमारे बीच इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने आए हैं। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और इस पूरी कड़ी में, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारी प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष माननीय इंजीनियर BS पटियाल जी हमारे समक्ष मंचासीन हैं। सर, आपका भी एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा ही बल्कि पूरा विश्वास करता हूँ कि ये संगोष्ठी का जो निरूपण है वो हम सफलतापूर्वक करेंगे और इस मंच के माध्यम से जो भी कथन, जो भी शोध प्रस्तुत किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज कल्याण, पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। कल मैंने एक वाक्य कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज विद सस्टेनेबल माइंड्स। उसी कॉन्टिन्यूशन में हम आज एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, एक वैश्विक समाज का हिस्सा है
तो सामाजिक इकाई के रूप में हमें ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस की मैं सक्सेस को सिर्फ बहुत छोटे से मानक पर मापता हूँ कि कम से कम यहाँ पर बैठे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपनी चॉइसेस को फ्रेम करना शुरू करेंगे। बहुत सी चीजें इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने भी व्यक्तिगत रूप से सीखी हैं, लेकिन अंततोगत्वा हम सभी को ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार समाज और प्रकृति के लिए कैसा। मैं जब इस विषय का अध्ययन कर रहा था तो साइंस, आई एम बेसिकली द आर्ट स्टूडेंट, तो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट और काइंड ऑफ आप क्या कहते हैं द्वंद्व रहता है दो डिसिप्लिन्स के बीच में। एक टैबू भी है यूजुअली हमारी सोसाइटी के अंदर कि साइंस स्टूडेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू आर्ट स्टूडेंट्स। तो कई बार तो आर्ट स्टूडेंट्स को पीड़ा भी देता है। So, science is made for the welfare of society. It enhances the living standards of human beings. ये मुझे याद आता है 3 Idiots का everything that reduces human efforts is called technology or science. So मेरे मन में ये प्रश्न है कि बम बना कोई और रहा है, उसे खरीद कोई और रहा है, उसे गिरा कोई और रहा है और उसके परिणाम कोई और। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर जहां पर साइंस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, टेक्नोलॉजी को इनोवेट करता है, ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर एक अकेली इकाई के रूप में, एक सिंगल यूनिट के रूप में हम इस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ये चुनौती। और ऐसी स्थिति आई 18वीं सेंचुरी के अंदर मैं बताता हूं कि एक लॉजिकल पॉजिटिविस्ट मूवमेंट चला जिसको पॉजिटिविज्म कहा गया, साइंस के लोग अच्छे से जानते हैं। उसके अंदर बोला गया कि एवरीथिंग दैट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और नॉट वेरीफाइड बाय द एम्पिरिकल फैक्ट्स should not be included in the domain of science. In other words, they straightly discards metaphysics. So what we are witnessing today in this scenario is the impact of that elimination when we segregated metaphysics from science. Metaphysics is about values. Metaphysics is about morals. Yes, we developed the technology, we developed the things, but it is metaphysics, it is axiology who told us when, where, how, and what quantity we have to use technology in order to sustain this ecological system. With these words, I once again thank you all the dignitaries to be witnessing this national conference. Welcome, welcome, and welcome. Thank you very much. Thank you very much, sir. Very rightly said that it is the time that we have to wake up. Because as yesterday, Professor D.R. Thakur and our Bagi Chairman sir told us about the value of the environment. And as the Professor Thakur said, one tree is the name of the mother. Right? So it is the right time to wake up. We do not only have to plant the tree, but we have to protect that tree until that is not properly grown. Thank you very much, sir, for your valuable welcome words. Now, it is the time to the invited talk. I would like to call Professor Adarsh Pal Vish on the dais for his valuable words. Before Vish sir come on the dais, I would like to tell you something about sir. Dr. This is a big matter. I beg pardon.
that during the facilitation ceremony, we miss a very important person who is the soul of this institution. I would request our worthy principal sir, please facilitate our chairman sir. Please sir. Please, with a round of applause, thank you. And with this, I would like to call our worthy chairman sir on dais for his valuable words. Thank you, Ranan. सभी को नमस्कार, good morning. Today's event, chief guest, because now we are in the second day in a row of this event. So today's chief guest, Professor Adarsh Pal, with sir, so we extend our heartfelt gratitude to you. You have spared your valuable time and be a part of this event, and you are showering your blessing since last evening. So we are so thankful to you for your sparing your time and be here. Along with the chief guest, other dignitaries on the dais, Professor Pawan Ahasa, Dr. H.S. Padiasa, FPU Shimla से हैं, Professor Bhalchand Chaman साहब, धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, Professor Deepak Patania साहब, President Johim Science Congress Association, Professor Rajesh Kumar Sharma साहब, मंडी यूनिवर्सिटी से सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, प्रोफेसर सुनील कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर सरिता पठानिया, एसपीयू मंडी, डॉक्टर जगदीप वर्मा साहब, डॉक्टर भगवती प्रसाद साहब, and other research scholars, teachers, faculty of Minerva, group of colleges, College of Education, Arts and Sciences, and my dear students. You all are welcome, and I appreciate your presence, your patience. Since yesterday, many of the persons they are bearing with us and doing something originally in the interest of the nature, society, for this planet. Because yesterday all of us there, and I was not very much aware of the facts and figures of this event, because this is a educational institution and it is our moral obligation and duty to conduct these type of conferences, workshops, and all. Now I have come to this conclusion, especially I am addressing this thing to Dr. Deepak Patania and Dr. Rajesh Sharma sir. Sir, you are doing a really good job, and on the behalf of this organization, Minerva Group of Colleges, so we extend our unconditional support to you in your journey. जब भी आपको किसी भी तरह से हम लगे कि हम आपके सहायक हो सकते हैं, we can assist you, we can support you. So without hesitating, without any delay, please convey your thoughts to us
convey your plans to us, and we will be very grateful to support you, to help you, to assist you. Because this program which we are doing in the different corner of the nation, and yesterday Dr. Rania sir has announced yes, next conference maybe they will do it abroad. So उसके लिए किसी भी तरह से हर जगह हर स्थान पर और हर तरीके से तन मन और धन से हम आपके सहयोगी रहेंगे, हम आपके साथी रहेंगे। जैसे कि कल भी मैंने एडमिट किया था, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक and I have learned from my gurus like Dr. Prashant. If you are not a master of the topic, if you are not the Gyani of that topic, you should not very much go into that topic because अधूरा ज्ञान या खास से किसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करना वो ठीक नहीं हो रहा है। बिकॉज द चेयर आई एम होल्डिंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम होल्डिंग, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर। बट अगेन बिकॉज दिस टॉपिक इज सस्टेनेबल प्लैनेट, 21st century opportunities and challenges. Being a human, I am directly connected with this topic. I have seen many of the students, they are gossiping, beta, आप because मेरा जब मिस हो गया था तो मैं खुश हो गया था, मेरे को आज नहीं बोला और मैं कितनी ताकत लगा रहा हूँ अपने माइंड में कुछ अच्छा और रेलेवेंट रहने के लिए, घूमने के लिए। So please pay some respect to that. Because I am not very much eager to flash on the sitting and say something on this dais, because I am not here because of my qualification, because of my experience, because of my any contribution to the environment. I am just here because of my chair. So please bear with me for the next 5-10 minutes. So sustainable planet, as Dr. Prashant is saying, and he has well said, is sustainable development is not the issue. The issue is sustainable mind. And what is the solution? How the mind could be sustainable? And the answer is with education. So without education, because since last day in the morning, तो कुछ शब्द जो हैं sustainable लड्डू वाले ठीक है, सस्टेनेबल प्लैनेट, ग्रोथ, सेव नेचर, ग्रो ट्रीज, सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, and all these type of healthy words, biodegradable, do not use plastic, do not waste plastic. So these type of heavy words we are listening since yesterday. So obvious है कि इस समस्या का जो समाधान है वो समाधान है शिक्षित सोसाइटी। इस समस्या का समाधान है संवेदनशील सोसाइटी। शिक्षित और संवेदनशील सोसाइटी किस तरह से हो सकती है जब every person of the society should be intellectual and educated. Because I believe in the philosophy of Swami Vivekananda. 100 साल तो इस धरती से गए हुए हो गए हैं और उनकी जो फिलॉसफी थी कि जो एजुकेशन है, अगर कोई बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच सकता है तो स्कूल को बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और इस वाक्य से हम उनका जो थॉट का टुवर्ड्स एजुकेशन उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस फिलॉसफी को इम्पोर्ट कर रहे हैं। और ये जो फिलॉसफी है कि एजुकेशन because we are sitting in an educational institutions and first and foremost responsibility is mine and my team कि कैसे अच्छी एजुकेशन मिले। एजुकेशन आप सब लोग जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं,
सो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज मैंने आपसे एडमिट किया है कि आई एम नॉट वेरी मच fond of the education. So many of the thoughts I have experienced in this world, because 50 साल से ज़्यादा मेरा होता है, so वो जो thoughts हैं, वो always I tried my best to express my mind कि कैसा हो रहा है. Education, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि what is the definition of education? What is the definition of good education? Education doesn't mean कि formal education as a degree. Yesterday, Dr. D.R. Sharma, D.R. Thakur Sahab, he was telling us कि education, if you have a degree, if you are not educated, if you are not knowledgeable, if you are not very contributed to the society and समाज, then that degree is a piece of paper only. जब नेल्सन मंडेला को उन्होंने कोट किया तो उन्होंने बताया कि नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट डेंजरस वेपन, इम्पोर्टेंट वेपन. सो उन्होंने एजुकेशन को एक वेपन भी बताया. सो मैं भी ये कहता हूँ कि एजुकेशन डजंट मीन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर माइंड. सडनली इफ एनीवन इज आस्किंग टू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, एक बच्चा खड़ा होकर कहता है और एग्जैक्ट आंसर करता है, मेरे को आंसर नहीं पता है. इट डजंट मीन यू एजुकेटेड और एजुकेटेड नहीं. मतलब ये है कि उसको इंफॉर्मेशन है, मेरा फोन से देख के बता रहा हूँ. एजुकेशन मीन्स सेंसिटिविटी, एजुकेशन मीन्स संवेदनशीलता. आपने देखा होगा करंटली ईरान इजराइल आपस में लड़ रहे हैं. आपको क्या लगता है कि जो ईरान के इस वक्त के हुक्मरान हैं, जो उनके लीडर्स हैं, क्या वो एजुकेटेड नहीं? बहुत अच्छी डिग्रियां उनके पास है, बहुत हाईली प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड के वहां से पढ़े हैं. क्या लेकिन जब पढ़ा लिखा नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप, जेनी बैंक्स जो जंग को लड़ रहे हैं, और जो वो जंग को लड़ रहे हैं, क्या उनके माइंड में पर्यावरण का कोई भी क्या हो, किस तरह के बॉम्ब, किस तरह की मिसाइलें वो फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, या रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, यूक्रेन बिल्कुल प्लेन हो गया है, गाजा पट्टी बिल्कुल प्लेन हो गई है. क्या वो लोग एजुकेटेड हैं? क्या उसामा बिन लादेन एजुकेटेड हैं? इबादत जी, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं, उसमें ब्लास्ट के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे? डॉक्टर्स थे. तो क्या डॉक्टर्स एजुकेटेड नहीं? आपने अफसर गुरु का नाम सुना होगा, वो भी डॉक्टर थे. और आप सबको पता है, आप जितने भी लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोगों ने नीट का एग्जाम दिया होगा डॉक्टर बनने के लिए, बट वो क्लियर नहीं होता है. So it means कि we can assess the sensitivity कितना टफ, वो सब लोग कहते हैं. So education doesn't mean this thing. Education means कि after getting the education, if you are not sensitive, if you are not संवेदनशील, if you are not responsible, then education doesn't. मैं बहुत बार कहता हूँ कि शिक्षा संस्कारों के बिना विश्व, education without values is unpoison. शिक्षा, मैंने ऐसा थोड़ा एक बार सर्वे किया, कुछ जो ओल्ड एज होम्स हैं उनको विजिट किया. उनको विजिट करने के बाद कुछ माताएं, कुछ बुजुर्ग वहाँ उनसे मिला, उनकी इंटीमेसी क्रिएट की. उसके बाद उनकी फैमिलीज के बारे में जानना शुरू किया. जब उनकी फैमिलीज के बारे में जाना तो पता चला कि किसी भी ओल्ड एज होम के अंदर कोई भी जो ओल्ड एज पर्सन है, उसके बच्चे ऐसा नहीं है कि वो दिहाड़ी करते हैं या वो गरीब हैं. उनके बच्चे या तो वकील हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, और बहुत अच्छा होता है. तो क्या वो एजुकेटेड नहीं? सो हमें इस चीज को सोचना है कि किस तरह की एजुकेशन, बिकॉज ये जो समस्या है, जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लेनेट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सो बेसिकली जो मैं समझ पाया हूँ, this is a clear-cut discrimination between the development and our nation. We cannot develop
at the cost of nature, and development को छोड़ा नहीं जा सकता, नेचर की दुहाई देके, तो हमें एक गुड बैलेंस करना है। वो बैलेंस कैसे होगा? डेवलपमेंट अगर कोई मेरे जैसा मूर्ख प्राणी करेगा तो वो सब कुछ तबाह करता जाएगा और डेवलपमेंट होता जाएगा। अगर वो समझदार करेगा तो कोई भी नेचर के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा और डेवलपमेंट भी करेगा। सो हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे से शुरू होकर हमारी पूरी टीम और बच्चे भी हमारे साथ हैं। सो वी शुड लर्न द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इफ वी आर एजुकेटेड। मैं तो कई बार ऐसा भी कहता हूँ कि सरकारों के जो काम है, सरकारें कहती हैं कि हम सड़कें बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम मॉल्स बनाएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। मैं कहता हूँ कि सरकारें कुछ भी ना करें, सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज पर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी एंड सस्टेनेबल प्लानिंग। जो हमारे गुरु, हमें हमारे गुरु को लौटा दो, सड़कें हम खुद बना लेंगे, पुल हम खुद बना लेंगे, तो पर्यावरण का संरक्षण हम कर लेंगे और हमें हमारा वो एजुकेशन सिस्टम लौटा देंगे। So it is all about education. आज कल से जो मैं समस्या जहाँ सुन रहा हूँ, क्योंकि कल हम बातचीत कर रहे थे बैठ के, मैं क्योंकि फ्रंट बेंचर में नहीं रहा हूँ, बैक बेंचर रहा हूँ, तो मैंने कल बात की थी कि जो फ्रंट और रूम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं और जो बैक बेंचर होते हैं उनके पास सभी समस्याओं के हल होते हैं। तो मैंने कहा जब सुना जब मुझे लगा समस्या क्या है? एजुकेशन। अगर हम में से सब लोग एजुकेटेड होंगे, सब लोग नॉलेजफुल होंगे, तो हमें खुद को पता होगा। वैसे तो आप बहुत हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट वेज एंड मीन्स दे विल टेल अस हाउ टू सेव दिस प्लैनेट, हाउ टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट मैं समझता हूँ कितने भी वेज एंड मीन्स निकाले हैं, जैसे गंगा की सफाई है। हमने पीछे सुना कि गंगा की सफाई के लिए अभियान चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि गंगा कोई स्ट्रिक्ट वाटर नहीं है, वो तो फ्लोइंग वाटर, सिर्फ उसमें से वेस्ट डालना बंद कर दीजिए, जो है वो साफ हो जाएगा। महीने में गंगा साफ हो जाए तो उसमें करोड़ों रुपये डालने की क्या जरूरत? हम साफ भी करे जा रहे हैं और जो फैक्ट्रियों का वेस्ट है, जो सीवेज का वेस्ट है, वो भी उसमें डाले जा रहे हैं, अगले साफ करे जा रहे हैं। गंगा का सबको पता नहीं फ्लोइंग वाटर है। गंगा गंगोत्री जब नदी से चलती है और जाके सागर में समुद्र में मिल जाती है तो वो फ्लोइंग वाटर है। मैं कहता हूँ कि आज सारी फैक्ट्रियों का वेस्ट और सारे सीवेज का वेस्ट डालना उसमें बंद कर दो। महीना 2 महीना लगेगा, जो बड़ा हुआ कानून ग्रो चला जाएगा, बरसातों में बरसात आके चला जाएगा, ग्रो खत्म हो जाएगा, उसमें आपको क्रिएट करने की क्या जरूरत है? और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो विदेशों में जाते हैं ये सब सीखने के लिए कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं बहुत तगड़ा बुद्धिजीवी हूँ, पर एटलीस्ट मेरे अंदर ये करेज है, हिम्मत है कि व्हाटएवर इज इन माय माइंड आई कैन स्पीक ऑन इट and I will convey that because I had that right and I had that right, gained that right through my constitution. आप लोगों को भी एजुकेट होना है, जहाँ जहाँ आपको जो करना है, विदाउट एजुकेशन यू कैन एजुकेशन स्वयं विवेकानंद 100 साल पहले जो उनका थॉट और फिलॉसफी थी, 100 साल के बाद भी हम जो अपने नाम पर कहते हैं कि हम स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाएंगे। भैया 100 साल और हो गए, कितने साल पहले की इस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज और पिछले कल जो भी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर उसको धरातल पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। कुछ अमल भी जरूरी है इबादत के लिए, सिर्फ सजदा करने से जन्नत नहीं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, मंजाल साहब हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं, बाकी डिग्नेटरीज हैं। इनका काम है गाइड करना, इनका काम है बहुत सारे फार्मूला बनाना, इम्प्लीमेंट इसको कौन करे? जो सामने यंग है, जिनके हाथों में हिंदुस्तान की आने वाले वर्ल्ड की बात हो। सो इम्प्लीमेंटेशन आज
आज मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, प्लेनेट को सस्टेनेबल करने के लिए कई तरह के हजारों तरीके यहाँ बताए हैं। उन हजारों में से कोई एक जिसको जो मेरी थोड़ी, मैं जैसे आज ये यहाँ प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद पॉलीथीन के अंदर सब्जी अपने घर में नहीं लेता। पॉलीथीन की यूज नहीं करूंगा, घर से झोला लेके जाऊंगा, सब्जी सामान रोज लाना उसी में लाऊंगा। ऐसे ही आप लोग अपने अपने मन में अपने अपने तरीके से जो भी पर्यावरण को कुछ कर सकते हैं। आज एक प्रण ले लेना कि ये 2 दिन हमने जो यहाँ टाइम और मनी एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया है उसका कुछ यूजेस हो जाए और वो एक स्टार्ट। बहुत सारी बातें मैंने ऐसे कह दी हैं, छोटा हूँ बड़ी बात, बट अगेन अपनी मर्जी से तो यहाँ आया नहीं, बुलाया गया। जब बुलाया है तो जो मन में आया वो मैंने बताया है आप लोगों को, और मेरी ये ड्यूटी भी है और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप सबने मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया, जय। Thank you very much, sir, for your valuable words. And yes, it is the right time to take pledge to sustain our planet. Because if the planet will sustain, then people will sustain. Now, moving forward, it is the time to invite for the first talk, and I would like to invite Professor Adarsh Palbridge. Before sir commentaries, I would like to tell you something about this sir. This is a distinguished professor of Botanical and Environmental Science at Guru Nanak Dev University, Amritsar, with over 21 years of teaching and research experience. He has served as chairman of Punjab Pollution Control Board and is currently an independent director at HLL, Government of India. He has made remarkable academic contribution with 140 research publications, 5 books, 26 book chapters, and 4 patents. Please give a big round of applause for the contribution to sir. जैसे आपने पूछे हैं वैसे आपकी आवाज है जबरदस्त, ऐसे टीचर्स मिलना बड़ी खुशी की बात है। सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द कॉलेज, द मिनरवा ग्रुप, इट्स चेयरपर्सन, वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, जिनको आपने सुना है और आपको सारा मैसेज मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, जितना उन्होंने आपको गाइड किया और पर्सनली इन्होंने सब कुछ खड़ा किया है और शिक्षा क्या है उसके बारे में बताया है। मुझे लगा कि मैं एनवायरमेंट छोड़ के शिक्षा पे बात करूँ, ये भी एक बात मन में आई। इस तरह दीपक जी और हमारे साथी राकेश जी हमारे मित्र हैं। मैं कोई चीफ गेस्ट नहीं हूँ आज, मैं लगभग जैसे 12 में कॉन्फ्रेंस हुई है, 5-6 में शायद 7 में मैं साथ ही रहा हूँ। आई फील एज ए पार्ट ऑफ दिस टीम साइंस कांग्रेस, तो उसका हिस्सा बन के हमेशा मैं आता हूँ और जितना कंट्रीब्यूट कर सकूँ करता हूँ। और जैसे कि बताया कि ये सोसाइटी है, अच्छा काम कर रही है और ये दो जो आज अच्छे ग्रुप मिनरवा और ये मुझे लगता है ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप सब आज इनका कॉम्बिनेशन है, आप बिल्कुल खा रहे हो, ये भी बधाई के बात है। और ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है दोनों मिलके आगे पूरे भारत में और पूरे हिमाचल में सुधार के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है हमारी और जिम्मेवारी भी, ताकि हम ये नहीं है कि ये नहीं करेंगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या हिस्सा है। तो यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये उसका हिस्सा बने, इसमें कंट्रीब्यूट करें, ये आज के दिन मुझे लगता है कि अच्छा फर्म होगा। और ये सारी बधाई भी उन लोगों को, ये सर्टिफिकेट और भगवान जी आज खुश हो गया, कल की गर्मी से आज आपको अच्छा मौसम चल रहा है, तो समय का भी ध्यान रखना है। तो बातें पर्यावरण की करना चाहिए। मुझे लगा थोड़ा सा एजुकेशन वाली बात जो हुई है, तो जो शिक्षा है
whether it is for career building or character building. मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, वैसे तो आपको बताया ही है, बताइए whether it should be for career building or character building. तो आपको समझना चाहिए, तो वही बात गुरुकुल वाली भारतीय शिक्षा की ये जरूरी है। तो मुझे लगता है जब वो हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात आपने बहुत अच्छी की है, क्योंकि वो कहते हैं ना, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything. जापान में अभी उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है, इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अपना ट्रेडिशनल सिस्टम, उसके ऊपर जो अपनी हिस्ट्री है, जो अपना कल्चर है, उसके साथ जुड़े रहना, वो भी बात उन्होंने की है, बहुत बहुत जरूरी है। यू मे बी एडवांस, but your roots should be your tradition, your history, your and proud of that system. भारतीय उसको अभिमान करना, उसके ऊपर चलना और मॉडर्न को जोड़ के रखना। तो जापान की बात मैं थोड़ी सी करना चाहता हूँ वहाँ से। उसमें एक क्वेश्चन था, वो इसी के साथ जुड़ता है। उन बच्चों को पूछा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? आप जैसे बच्चे बैठे हैं तो पूछा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? किसी ने कहा टू बिकम डॉक्टर, टू बिकम इंजीनियर, टू बिकम अ बिजनेसमैन। एंड व्हाट वाज द आंसर इन जापान स्टूडेंट? एनीबॉडी बता सकता है उनका आंसर क्या था? मैं हिंट देता हूँ, उनका आंसर सब एक था। बताइए, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू सर्व माई कंट्री। ताली जाओ। पेरेंट्स के स्कूल से ये नहीं, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, पैसा कमा लो, और ये जो घर बन रहे हैं, क्या कहते हैं, ओल्ड एज होम, ये बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? आप बताओ। नहीं बनने चाहिए। कई संस्थाएं इतने अच्छे अच्छे कि एसी लगा दिए, ये लगा दिए, इसका मतलब पेरेंट्स को छोड़ना। और भारत की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या चीज है? फैमिली सिस्टम, इंडियन फैमिली सिस्टम। उसका क्या मतलब है? एक छत, 3 पीढ़ी इकट्ठा और एक रसोई। बात समझो। आजकल बच्चे नहीं कहते शादी नहीं करनी, क्या फायदा है, एक ही बच्चा करेंगे। यू आर डिस्टर्बिंग द होल बायोलॉजिकल सिस्टम। और आप उसे देखते हो, ये भूल जाओ, दिस इज योर प्राइमरी ड्यूटी। गुरु नानक देव जी ने बताया कि कैसे आपने गृहस्थी जीना है और कैसे समाज को आगे। तो ये सब चीजें भारत की हैं, इसको प्राउड फील करना। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, उसी का भी शायद आपको जो टाइटल मिला होगा, तो उस टाइटल से भी बातें करिए ना, जो आगे करूँगा। इन्वायरमेंट जो एक इशू है, इशूज एंड सोल्यूशन, और उसके आगे क्या है? ए नीड टू लर्न फ्रॉम इको ट्रेडिशन, नीड टू लर्न फ्रॉम यूर गवर्नमेंट वाली बात की, आगे बढ़ने वाली बात की है। उसमें गलत क्या हो गया, वो ठीक कैसे होगा, उसके ऊपर बात है। तो मैं इन्वायरमेंट के ऊपर आता हूँ, वातावरण की बात हूँ। तो अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा भी क्या क्या पोल्यूशन हो चुका है और कितना हो चुका है। जितना सब बच्चे बच्चे को चुका है। कौन कौन सा पोल्यूशन हो चुका है जी? हवा प्रदूषित, सॉइल प्रदूषित, ठीक है जी, और वेस्ट वाटर प्रदूषित, सब कुछ हो गया। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी बात छोड़ दो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, किया किसने? बोलिए। हमने किया, तो ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। तो जब हमने किया, हम ठीक करेंगे तो होगी नहीं बात। उसमें कहाँ कमी है, पहले ये बताओ। और मैं कहानी बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। ये हम वाली बात में बड़ी जबरदस्त। जैसे अभी पहली वाली बात है, हम शिक्षा को ऊपर लेके जाएंगे, भारत को ऊपर लेके जाएंगे। सबने कहा भी वो विवेकानंद की वाला भारत नजर नहीं आ रहा, वो हम सारे करते रहते हैं। तो हमने क्या होता है, बच्चे बता सकते हैं, जैसे हम 100-150 लोग बैठे हैं, तो हम का मतलब जब हाल से छुट्टी होगी, 2 दिन का सेमेस्टर खत्म होगा, तो हम का मतलब कि ये जो बाकी 150 बैठे ना, वो करेंगे, मैंने कुछ नहीं करना। हम का मतलब ये करते हैं। तो इसको ठीक कैसे करना है, कौन करेगा? मैं करूँगा। मेरी कथनी और करने में फर्क ना हो। तो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जैसे आपने कहा ना, पोल्यूशन बाहर से तो आई नहीं। तो वेदर यू वांट
going to be polluters or non polluter? Tell me. बोलो नहीं बोल रहा क्योंकि देखो कहना बड़ा मुश्किल है। साथ में बड़ा अच्छा प्रण लिया है कि आज से मैं प्लास्टिक के थैले नहीं, क्योंकि प्लास्टिक से पहले की दुनिया और वो थैले हमारे मैं साथ लेके आया हूँ और मैं बांटता भी हूँ प्रॉपर्ली और यूज भी करता हूँ। ऐसी इंडस्ट्री बननी चाहिए। अपना कैंपस प्रिंसिपल साहब बना सकते हैं हम प्लास्टिक की कैंपस, बिकॉज अल्टरनेटिव्स आर। तो मैं वाली बात आई चाहिए। अच्छा उसका रिवर्स है। मैं आपने कहा कि हम करेंगे वादा मुझे अच्छा, जब मैं कहूँ यहाँ प्राइस मिलना है तो फिर कहोगे हमको मिले, क्या कहोगे मेरे। जब प्राइस मिलना है तो मेरे को मिले, काम करना है तो हम करेंगे। तो हम का मतलब बाकी करेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी, आपने बात समझ ली है पर कहानी से याद आएगा। बच्चों इधर देखो पीछे वाले, तो सामने कहा ना बैक टू बैक, जो पीछे वाले हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, पर बात भी सुननी पड़ेगी आपको। एक राजा है, उसने सबसे कहा कि रात को एक एक लोटा दूध का हम इस तालाब में डालेंगे, सुबह तालाब दूध से भरा हो। ठीक है ना। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। ठीक है। वातावरण की रक्षा कौन करेगा? हम। तो आदर्शपाल ने क्या सोचा, कहते यार ये राजा पागल हो गया, दूध वेस्ट कर रहा है। जब मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा, बाकी में दूध ही डालना है, तो कहाँ पता चलेगा 10 वाले पानी डाल। रात आ गई, सुबह आ गई। सुबह तालाब किसका भरा था? बोलो क्यों? क्योंकि सबने वही सोचा। तो ये नहीं होना। तो सुधार कौन करेगा? नहीं। बदलना किसको है? स्वयं। माई इन्वायरमेंट इज my responsibility. It is not our responsibility. It is not somebody else's responsibility. It is not government's responsibility. It is not the law who will make the environment okay. It is me who will correct my. करोगे? मैं कोई कसम नहीं खिलाता, सिर्फ बता रहा हूँ what is the solution. So solution lies within me. I must realize my power. So what will happen? Once a chairman will thought, the whole system will be. When a prime minister will become, then I have to take care the whole country. आप बच्चों को एक से बदलनी है। अमृतसर से मैं आऊँ, मोदी वहाँ से आए, हमने इन्वायरमेंट के काम किया। वहाँ से आपने नाम सुना भगत पूरन सिंह, सिंगल वाला है अमृतसर में, उन्होंने वो भी काम किया सोशल वाला। उसमें जो मरीज होते थे उनको खाते लगाता था, वो रेडी पे लेके जाते। तो साथ साथ उन्होंने उस समय when there was no degrees of environment, nothing was there. He told that you should not cut the tree. जो बिश्नोई वाली हम सुनते हैं, जिन्होंने माताओं ने वृक्ष को आगे, तो मैं से और आजकल हमारे सींचे वाली हैं, वो खुदा दरिया को साफ कर रहे हैं। कई बार बच्चे मुझे कहते नहीं सर ये मेरे करने सीखा। You have to begin. The change will come. ऐसे नहीं तो भगत सिंह भी सोचता यार मैं फांसी क्यों लूं, चंद्रशेखर याद सोचता क्या तो अपने आप को गोली मारा, मैं भी क्यों साफ देता। तो बनोगे को लिखे कि नहीं, करोगे कि नहीं? तो आपको यूं मैंने तो आपको बता दिया रास्ता। लोग कहते नहीं रास्ता नहीं है, बन जाएंगे। तो ये रास्ता है, किसको बदलना है? बोलो बोलो। मैं। तो वातावरण की रक्षा कौन करेगा? मैं करूँगा। देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूँगा। ये बात को ठीक करना है। अब करना कैसे? हाँ, अब आप ये मैं ठीक है एनवायरमेंटलिस्ट, चेयरमैन की रहा एक्शन एनवायरमेंट का, तो रास्ता कहाँ पे? जैसे हो गया कि उसके ऊपर मैं नहीं आता। That the way forward is Indian traditional living system. भारतीय रहन सहन, भारतीय जीवन शैली, जो मैंने पहले एग्जीबिशन उसमें बताई, जो वातावरण के साथ जुड़ने वाली है, वो रास्ता है। जैसे कि बोलते हैं बैक टू नेचर, बैक टू योर इंडियन लिविंग सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब आप कहोगे हम तो आप पीछे लेके जा रहे हैं ना। जो कौम अपना हिस्ट्री भूल जाती है, अपना ट्रेडिशन को आगे नहीं बढ़ सकती।
जापान जब आजाद हुआ, स्पेन आया, उन्होंने जो सारे गुलामी के चिन्ह थे ना सारे खत्म कर दिए, उन्होंने अपने चिन्ह दोबारा किए कि हमारा ज्ञान क्या है, हमारा विज्ञान क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। ये सारी बातों को फिट होता है इन्वायरमेंट में, बिल्कुल फिट होता है। तो वो कैसे फिट होता है? देखिए, अब हवा प्रदूषण क्यों क्यों हो रहा है? वो इंडस्ट्री आ गई, व्हीकल्स आ गए, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सारा रीजन आपको पता है। आप तो अच्छा है हिमाचल में बैठे हो, यू गो टू दिल्ली, आजकल ये नया टर्म आ गया ना, एक ही हो गया हमारी वो PM 2.5, PM 10, ये कहाँ से आ? तो कौन सी सभ्यता ये कहती है कि हवा शुद्ध हो सकती है? बताओ। कोई बहुत सी सभ्यता है ना, सिस्टम में है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई अलग अलग है। मैं उस तरह नहीं कंपेयर कर रहा। क्या वो कहते हैं कि हवा शुद्ध हो सकती है? कौन कहता है? भारतीय सभ्यता। किस तरीके से? बोलो। दीप प्रज्वलित करना, घी के दिए जलाने से, हवन करने से, यज्ञ करने से हवा क्या होगा? प्रदूषण। तो हमारा ट्रेडिशन कहता है कि हवा प्रदूषित होनी ही नहीं है, हमने की गलती से इसको ठीक कर। जो सबने बात की थी वो बड़ी अच्छी बात है। गंगा बेचारी लोग कुछ कह रही है, यमुना कुछ कह रही है, यमुना गंदी हो, गंदी तो हमने की है। यू स्टॉप डूइंग पोल्यूशन, इन्वायरमेंट इज ओके। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, वेदर यू आर पोल्यूटर और दुनिया में दो तरह के लोग, आप कैसे पोल्यूटर हो? और भारत में क्या कहा गया? धरती माता, पवन गुरु पानी पिता माता धरती, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वृक्ष के ऊपर धागा क्यों माना जाता है? बोलो। वृक्ष को काटना नहीं है। हाँ, वो जो लकड़ी देगा लेना, जंगल अच्छे हैं, जंगल से जो खुद गिरेगा खुद मिलेगा वो मेरा है, और जंगल काट के मैं कुछ बनाऊं वो गलत है। वृक्ष से जो मिलेगा, फल मिलेंगे, फसलों से जो मिलेगा वो मेरा। हाँ, फसल ले ली, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड डाल दिए, उसमें आग लगा दी स्टबल को, उसमें खादें केमिकल वाली डाल दी, जो गोबर है वो वेस्ट करना शुरू कर दिया। अपने ट्रेडिशन को जितना छोड़ते जाओगे उतना तो हमारे यहाँ वृक्ष को काटना की पाप। दूसरा, ये हवा की बात आ गई, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है आपको बताइए? Do you have any mechanism to generate oxygen? बताइए। क्या कहीं से ऑक्सीजन बन सकती है? It is only plants who can. सबको पता है। तो ग्रीनिंग फॉरेस्ट हो जाए, एफॉरेस्टेशन हो जाए, वो आपको जो दे रहे हैं उसको लेना, उसको सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। जो वर्ड आप नया चक्कर आ गया। पहले जो लकड़ वाला जो होता था ना, जो लकड़ी आप जलाते थे, वो जो गिरती है वो वाली, जो फर्नीचर बनता था जो गिरता था, तो धीरे धीरे को क्या करना शुरू कर, वो नहीं करना। दूसरी बात पानी की, आपने अपने रिलीजियस सिस्टम में गए, मंदिर गुरुद्वारे कौन जाता है? तो सब जाते हैं। उसके आसपास एक पॉन्ड क्यों है? नहीं हो रहा है पॉन्ड, नहीं आप मुस्लिम चले जाओ, क्रिश्चियन चले जाओ, कहीं है पॉन्ड? ये हमारे यहाँ क्यों है बताओ? फिर उस पॉइंट में आप क्या लेते हो जाके? चरनाव में वो है तो पानी आप कहते हो चरनाव में, और फिर उसको कहते हैं सरोवर है। तो वाटर इज द एलेंशियल ऑफ लाइफ। दुनिया में अमृत कुछ नहीं है, पानी ही अमृत। पानी को गंदा नहीं करना, जो हमने कर दिया अमृत है पानी। इसीलिए क्या होता है, वो ब्यूटिफिकेशन नहीं है, वहाँ आपकी बड़ी अच्छी आएगी, वहाँ मंदिर का वातावरण अच्छा है, ये नहीं है पर्पज। द पर्पज इज दैट द वाटर शुड नॉट बी। नदियाँ माताएं हैं, नदियों के पास सभ्यता बनती। मैं ट्रेडिशन बच्चों ने बता दिए, आप उस सिलेबस में पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? ये जो पहले ज्वाइंट फैमिली होती है, नाना दादा आपको ये कहानी सुनाते, अब पता नहीं कौन सुनाते।
इज ए फॉर्मल एजुकेशन। हमारी एजुकेशन गुरुकुल वाली जो है ना, वो घर से शुरू होती है। जो मदर टंग वाली बात है वो भी बहुत जरूरी है। जो अभिमन्यु ने कहा सीखा था, माँ के पेट से, और साइंस भी उसको मानती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम बने, जो सीनियर लेवल बने, कि ये अंग्रेजी पढ़ के नहीं बने थे। उन्होंने स्कूल कहाँ से सीखा था? अपनी मदर टंग। तो नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर मदर टंग, कभी मत कहना भी अंग्रेजी से समझा। तो पानी किसी और कंडीशन में है, पानी की इस तरह का बचाव नहीं। तो वो बात आ गई। अब तीसरी बात आ गई वेस्ट वाली। अब आप चारों तरफ क्या देखते हो? वेस्ट जिसको बोलते हैं गार्बेज, कूड़ा। ये किसका कल्चर है? वेस्टर्न कल्चर। बड़ी वेस्टर्न कल्चर, यूज एंड थ्रो। बट इज योर कल्चर? आप क्या देखो, मेरे या बाकी जो मेरे ऊपर करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो मेरा बड़ा कचरा है उसके कपड़े मैं डालता, जो मेरे से लेबर थे उनकी बुक्स में लेके बुक्स यूज करता, जो पेन है, घड़ी है, वो चीजें कुछ में। रसोई से कोई कचरा, कोई नाती दादी, कोई माता बाहर बचा के तो पशुओं को जाता है, वो पक्षियों को जाता है। शूज, मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो जो से आया, टूथपेस्ट आ गई, ब्रश आ गया, हम वो भी वेस्ट। मैं पंजाबी में ना क्या हूँ, स्वाद है ना, स्वाद भी छोड़ देते हैं। स्वाद आती है नदी बर्तन साफ, एंड दैट इज इकोनॉमिकली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। अब आप डिटर्जेंट यूज करते हो उसमें फास्फोरस है, और ये क्या सीखा आपने? वेस्टर्न। उनका क्या है? यूज एंड दैट हैज जनरेटेड वेस्ट। जो हमारा कल्चर था वो था जीरो वेस्ट। क्या था कल्चर? नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज। डज नेचर प्रोड्यूस एनी वेस्ट? आप बताओ। नेचर नेवर। बोला पहाड़ देखो, यहाँ से ज्यादा बच के आप तो दूसरे पहाड़ में जाते हैं, अमृतसर आओ, दिल्ली जाओ, और बड़े शहर देखो, नीट के भी पहाड़ बन गया, तो कूड़े के भी। जो आजकल जिसको सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबिलिटी, दैट वाज अवर लिविंग सिस्टम। वो भारतीय जीवन शैली में था। मैंने आपको कुछ बातें आपकी जीवन शैली की याद कराई है, इसलिए क्योंकि आपको घर में बताई गई, नहीं बताई गई। जो इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में सेग्रीगेशन, वेस्ट मैनेजमेंट के रूल क्या बन गए? अंग्रेजों से सीखे। एक बड़ा डब्बा, एक काला डब्बा, एक नीला डब्बा, और नए रूल में डब्बे बढ़ा दिए हैं। जितने डस्टबिन बढ़ाओगे उतना वेस्ट ज्यादा। बट आवर कल्चर इज नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज। लेडीज को पता होगा, कपड़े बेचते थे, बर्तन मिल जाते थे। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जी वो सारा, बट उसको छोड़ दिया। That has created a problem of environment, especially in India. बात में तो की है गोबर कहाँ जाता था? खेतों में। अब कहाँ जा रहा है? नदी। हमारा सीवरेज सिस्टम नहीं था, we were depending on the dry latrine। वो ड्राई लैट्रिन जाता था सारा सिंगल मैटर खेतों में, वो फर्टिलाइजर का काम। अब हम यूरिया डीएपी ये सारे रॉन्ग मॉडल्स, वेस्टर्न मॉडल्स, दे आर टोटली नॉट इन रिलेशन विद आवर सिस्टम। अब भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, तो वो अब क्या वी आर बाइंग मैक्सिमम, यूजिंग लेस एंड थ्रोइंग मैक्सिमम। ये होता है, इसको छोड़ना, इसको करना। ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, बाकी ये बुक्स में नहीं है, ना ही कोई टीचिंग सिस्टम में है। तो आप भी कहेंगे यार आपने तो कोई रास्ता तो बताया, तो वो रास्ता अपने आप पर ठीक है। अब प्लास्टिक की बात करो, वेस्ट में कहता हूँ नंबर, टाइप्स, कैटेगरीज। बायोमेडिकल वेस्ट होना कभी कहाँ जाता है?
हॉस्पिटल। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हॉस्पिटल्स? हॉस्पिटल किसके लिए बने थे? बीमारियां ठीक करने के लिए। बट व्हाट दे आर जनरेटिंग? वायरस। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में करते थे, हमारी रसोई हमारा हॉस्पिटल होता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको बोलते हैं, जो आयुर्वेद का करते हैं, आयुर्वेद में कोई बायोमेडिकल नहीं बनता है, योगा में कोई बायोमेडिकल नहीं। फिर इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया, उसके क्या बन गया? ई-वेस्ट, ये मोबाइल। ठीक है, टेक्नोलॉजी आने की है, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, बट development only oriented on economics and not on environment will finish the system, खत्म हो जाएगी। तो बातें तो सस्टेनेबिलिटी होती हैं, बैलेंस की होती हैं, बट नो वेयर ऑन द ग्राउंड द बैलेंस। बिल्कुल ठीक बात है, कोई सीवरेज हमने रेगुलर किया सीवरेज, पर अंग्रेजों ने आगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, हमारे यहाँ कोई प्लांट इंडस्ट्री भी हमने ले ली, उनके यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट है, चिमनी के आगे फिल्टर लगते हैं, यहाँ पर आते हैं, वो पोल्यूशन होता है। बातें फिर सोल्यूशन और कौन सा लीजिए? बायोलॉजिकल सोल्यूशन, जो नेचर ओरिएंटेड सोल्यूशन, जो पहले मैंने बताया। जो प्लास्टिक की बात है, तो अल्टरनेटिव तो प्लास्टिक का हमारा कपड़ा था, जूट था, कॉटन थी, ये सारे फैले हुए, आप उसकी इंडस्ट्री डेवलप करो। बायो इंडस्ट्री की मतलब बात, उससे माइक्रो प्लास्टिक के लिए वो अपने फूड चेन तक पहुंचे। ये सारी बातें आपके ध्यान में है, उनको कैसे करना। माई वेस्ट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई एनवायरमेंट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चाहे मैं इंडस्ट्री लगाऊं, चाहे बिजनेस करूं, ये छोटे छोटे घरों में भी ये फार्मूला लगना है। और ये रूल रेगुलेशन इतने ज्यादा है कि वो इम्प्लीमेंट होने, फिर आप कहते हैं कि सख्ती कर रहे हैं कि कैसे बैलेंस होगा, कौन ठीक करेगा। तो अंत में मैं ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। ये सारा ब्रॉडली सिस्टम है, भाई ठीक किसको करना है? बोलो, स्वयं को बदलना। किसको बदलना है? स्वयं को बदलना। रास्ता कहाँ से सीखना है? अपने इंडियन ट्रेडिशनल लिविंग सिस्टम से। नए सिस्टम में आओ, बट उसको सिस्टम वो बनाओ। और इसका जो अंत का एक शब्द मैं करके उस बात करूँगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी वो एक मिशन लाइव सुना किसी नाम, उसमें यही बातें कही, ग्राउंड टिपिकल उसको लेके आना है, अपने मॉडल्स के ऊपर चलना है। रादर आपके मॉडल्स दूसरा वर्ड फॉलो करे, इसमें भी स्लो। मेरा अपना जो सारा रिसर्च है वो आप एक और क्वेश्चन पूछूँ, हु इज द बेस्ट वेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड? चलो वेस्ट बन गया, हु इज द बेस्ट वेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड? किसी को पता है? अब तो ये हुआ इन द फार्मर्स फ्रेंड, आज के वहां होता नहीं, मेरी सारी रिसर्च इसके ऊपर है। वो सारे वेस्ट को जनरेटिंग, उसको फर्टिलाइजर बनाता है, मैन्योर बनाता है, उसको आजकल वर्मिंग कंपनी का नाम है, उसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। दैट इज द वर्ल्ड बेस्ट फर्टिलाइजर। हम लड़ाई कर रहे हैं यूरिया डीएपी इतने कारखाने लगा रहे हैं। ये बायोलॉजिकल सोल्यूशन सारे सिस्टम में अवेलेबल है। ये जो माइक्रो एग्रोलॉजी के फील्ड में ये है सोल्यूशन, बट दे आर वेरी स्लो। सफर वाले सोल्यूशन हैं, ये एक दिन वाले सोल्यूशन होते हैं। सही में ये आजकल कहते रिपोर्ट से सब कुछ चलते हैं, ये नहीं चलता। You have to depend on those. So the last word is विकास भी विरासत। क्या चीज? विकास भी और विरासत भी, उसमें से रास्ता आपके इंडियन ट्रेडिशन में है। विकास को छोड़ना नहीं है, पर किससे लेनी है? जो माइंड है, सलाह किससे लेनी है? अपनी विरासत से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, sir, for this wonderful talk. You told us very good difference between I and we. There is a one wonderful proverb, "Chota chana bajega na." When we put a marble in a plastic and we shake, then that sound very well. So don't hesitate that I am single, I can't do it. You can only do it. When we depend on we, then जैसे सर ने बताया, फिर काम यही होगा, तालाब भरा होगा, but with the water only, not with the middle. Because everyone thought कि it will be done by that personality only, I will left it.
So thank you once again. Thank you very much, sir, for this wonderful talk. Now, by proceeding, now I would like to invite Dr. Harinder Singh Banyal from HBU Shimla. Before sir come on diet, I would like to tell you something, sir. Harinder Singh Banyal is an associate professor in the Department of Biosciences at HBU Shimla with nearly 2 decades of experience in teaching and research. His expertise spans wetland ecology, fishery, and wildlife biology, with research across diverse ecosystems, including the northern western Himalaya, Rajasthan, and Gujarat. Previously, he served as scientist at the Geological Survey of India for 11 years and as an assistant professor in Himachal Pradesh. Dr. Banyal has actively participated in numerous national and international academic events and hold 1 utility patent along with 3 design patents. So, ladies and gentlemen, put your hands together for H.S. Banyal. Thank you. Thank you very much for nice words. Professor Adarsh Palviji, Chief Guest of the day, Former Chairman of the Pollution Control Board, Engineer J.S. Patialji, Chairman Minerva Group of College, Dr. Prashant, Principal Minerva College of Groups, Professor Deepak Kothaniaji, President HSCA, Professor B.C. Chauhanji from Central University of Himachal Pradesh, Professor Rajeshji, Dr. Rakesh Thakur, Organizing Secretary HSCA, rest of the office leaders of HSCA, faculty members of Minerva Group of College, and students. We all today have gathered here for this conference which pertains to sustainability. A lot has already been said about sustainability. As you know, sustainability is a need of the hour. No doubt, development is very much required, but we have to take care of our environment also. It is in our interest only. If environment remains intact, protected, then it will ensure our safety also. Actually, already we are running short of time, so straightly I will come to my topic. My topic pertains to fish diversity of northwestern Himalaya. You must be wondering that fish diversity, sustainability, what role it does. Actually, I would like to talk in a broader perspective, broader sense. First of all, I would like to speak a little bit about water itself. Water, you know, it is very important component. When we talk about the 5 elements of life, water itself is very important. Origin of life. I think most of the students sitting here, some of them or maybe mostly belong to science background. So you know about water, origin of life. Life originated in water itself. So life from biases to human society itself depends upon water. Fishes, they reside in water, all of us know, and presence or absence of fish itself in water is indicative of water quality. When fish is present, it means water is of good quality, and fish diversity, how much fishes they are present in water, they tell us about the health of water, health of aquatic ecosystem. So northwestern Himalayas itself, they are very important from faunal diversity perspective, because you know they are one of the hotspots which are present in our country. We can say worldwide also. If we take into consideration world scenario, so Himalayas are one of the hotspots.
And talking about water and fish diversity itself, Himalayas they play very important role. Very important rivers they originate from Himalaya itself, northwestern or we can say Himalayas, Ganges riverine system, Indus riverine system. They all originate from Himalaya itself, and these rivers they are fed by numerous other rivers, streams, and they are very important from water perspective, or we can say from water diversity point of view. And freshwater supply, biodiversity hotspot, these are some of the salient features of this particular ecosystem. Livelihood opportunity, many people, they are dependent on these aquatic resources for income. Fishes itself, they are a nice source of income also. Next. Himalayas, I have already told you about Himalayas, very importance, and talking about fish itself, so fish diversity is allowed, which is present in these aquatic resources. Around about 200 species of fishes they are reported from northwestern Himalayas, and northwestern Himalaya, it comprises of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Ladakh, and Jammu Kashmir. They are present in northern landscape. Talking about Himachal Pradesh itself, around 110 species they are reported from this region. So we can imagine the importance of this region from fish faunal diversity perspective. Next. This is about categorization of this particular region. Next. There is one salient feature of this landscape, that there is variation in altitude itself. This altitude varies from 300 meters to more than 7,000 meters. So we can imagine diversity in topography also. This diversity accounts for the presence of diverse types of species in this particular region. Next. This is about the key tributaries. I have already told about that. Next, rivers, rivers they are important because they provide us many services, and their healthy nature is very much required. Their health is directly linked to us, our survival also. Next. There is another hill streams. Hill streams, they are present, typical kind of hill streams. They are present in northwestern Himalayas, or we can say Himalayan region normally. And these streams, they are different from the rest of the streams which are there in India, which are present in western parts and some other parts of our country also. When we talk about these water bodies or streams, so they have got certain characteristic feature. These features distinguish them from the rest of the streams, or we can say water bodies. One thing is that water current is quite violent or fast in these streams, as well as there is a change in water, or we can say thermal regime also, which varies from upland to lowland streams. There is variation, and water current is very fast, and due to the presence of fast water current, only specialized kind of species they are present. You must have heard about trout. So we have got one species which is known as snow trout. It is indigenous species, and it is known as Chilothorax. The name of genus is Chilothorax. It is represented by two species, Richard Sunai and Gladiostomus. They are present in Himalayan region. Whereas we have got aquatic fish also, that is known as rainbow trout. It is introduced in India, and it is present in upland streams. And these streams, they have got strict preference for temperature. Their range is very narrow range. They are not, I would say, hardy species. Hardy in the sense that they don't have a broader temperature range. Their range is very narrow. And from commercial aspect, commercial fishes point of view, these species they are very important. And these days several activities which are going on. Activities I would say development activities. They are going
going on, and so we have to take good care of these aquatic resources. I will talk about these things in next slides. Next, this is depiction of how changes they took place in topography, morphology, various other characteristic feature of these states. We have got the upland streams, midland streams, and lowland streams, which are present in this particular region of our country, that is northwestern Himalayas. Upland streams, they are different. They have got, their bed material is mainly consists of rocks. Rocky bed material is there. Water current is very fast. It is due to the presence of steep, gradient. The slope is steep. That's why. And we have got very less number of fishes which are present in these conditions. I have already told you about those species. 6 to 4 species they are present. Chilothorax is indigenous genus, and we have got into these rainbow trout and trout also which are present there. And comparatively with landscapes, they have got ideal condition. Water temperature again it is preferred one. It is conducive for many more species. That's why fish diversity increases in the midland stream. Habitat heterogeneity, or we can say substrate, it is heterogeneous in this stream. That's why fish diversity is low. And it is maximum in lowland streams. Again, meandering geometric pattern, which is a characteristic feature of these water bodies. Meandering, they meander in the plains. These lowland streams, these are present in the plain region of our country, or we can say in the northwestern Himalayas. That's why fish diversity is more in the lowland streams. Next, I have already told you about these streams. Next, midland streams, again fish diversity is more in these streams. Next, lowland streams, they have got high aquatic fauna diversity. It is due to the fact that the substratum is heterogeneous and other physicochemical parameters or conditions they are conducive for the species. That's why diversity is low. Next, this is about the role of fish fauna. Fish fauna they play very important role in ensuring health of aquatic ecosystem, recycling of organic matter. Higher vertebrates they are dependent upon fishes itself. Plankton, plankton. When we talk about plankton, they are categorized into 2 types: phytoplankton and zooplankton. Their presence, their amount is again controlled by fish itself. In a way, eutrophication of water, we can say, it is controlled by fish itself, quality of water. So, they are very important bioindicators of water quality. Next. This is I have already told. Actually, fish they reflect health of water. There are several changes which to take place in aquatic quality or water quality, and fishes they tell us about those changes. Next. These are some of the indicator species which tell us about the quality of water which are present in this particular region. Cold water, it represents sensitive species, sensitive which are indicator of quality itself. The thermal profile, or we can say water, they indicate water quality. Chilothorax, Richardson, like I have told you, is so strong. It is plentiful in our land streams and it prefers cold water. And that's why its presence itself indicates aquatic quality. Next. You must have heard about golden marshal, which is known as Indora. It is again critically endangered as per ICN. Its population is declining in the wild, and there are several factors which are accounting decline is in its numbers. Damming is one of the this factor, because we found constructing dams, but dams they are very important for us because they provide us so many services. But in a way, aquatic diversity and that fishes they suffer. Many indigenous species, Indora is one of them. It moves upstream, it migrates upstream for spawning, that is acting. And this upstream movement is
hampered when we construct dam across the stream. So what can be the solution? We have to provide side channels or fish ladders. We have to provide them. If proper passage is provided, then these fishes they can move upstream or spawning, and it spawns in the small streams. Now you must have in mind, so how we can distinguish between rivers and streams. There is one concept which is proposed by Minerva. When any river originates, its diversity increases when we move from upstream to downstream. There is an increase in diversity. There are several factors which account for this increase in diversity. So stream, what is stream? Stream is a natural water body which contains water at least part or most part of the year, and it has got diversity. That is biota, it is channel and around watershed. So rivers they have got different feature when we compare them with the streams. Streams, no doubt, they have got substrate that is different from rivers. Water is again more in waters. They have got broader floodplain, whereas in case of stream floodplain is minimal. So we can distinguish based on several factors between the two. So I was talking about Corbicuda. It is an important species, and its population is declining, and ICR is trying to has taken several steps to Indian government itself has taken several steps to enhance its population in the wild. But we have to take some factors into consideration, and damming is one of them, and this removal of bad material. We remove bad material of streams and rivers for various purposes, and this removal of bad material is posing serious threat for its existence, because it has got strict preference for substratum. It has got specific kind of substratum. It likes specific kind of substratum for spawning, for handling. So this indiscriminate removal of bad material, it is not good. There is another species of stages paralysis. Again, it is present in these streams, and it indicates again aquatic quality. Next. Besides, we have got tolerant species also. These species, they have got broader tolerance. We can say these are hardy species. When Chana Bacteta, Chana Malvius is present in any aquatic ecosystem, it means that ecosystem has got moderate organic load, or we can say its quality is not that good. And likewise, this Oreochromis, Nauticus, Tilapia, and common carp, these species they are in a capable of water which have got organic load. Next. So this is a little bit about distribution of species. Next. Again, when we talk about northwestern Himalayas, so this is the little technique. We have got different orders of fishes. So carps they are dominating, followed by these catfishes. They are on second number, and we have got Perches, Cruciformis, and the rest of the minor orders of the fishes. Next. So this is a little bit about these species. This is the tutorial definition of these species. Next. So what will be the opportunities for sustainable planet? So how we can talk about sustainability in terms of these ecosystem services and biodiversity conservation. We can ensure food security through sustainable fisheries. So sustainable fisheries is very much required. A lot of people they are dependent upon fisheries as a food, as a source of income also. So we have to go for this sustainable fisheries. Community-based fisheries development. We have got ecotourism potential in Indian rivers also. These species, actually these species, they are very important from commercial fishes point of view also. And a lot of people, they prefer angling when these fishes are present in the wild. And next. So this is a little bit about distribution of these species. Next. Again, when we talk about sustainability in terms of these species,
I have talked about these threats, hydropower development, habitat fragmentation. I have talked about invasive species also. We have introduced certain species intentionally and accidentally also in these aquatic bodies. But these invasive species, they are very hardy, they have got higher growth rate, they are prolific breeders, and this act is not good for indigenous species because indigenous species they are breeding rate is comparatively low. They are not prolific breeders. That's why before introducing any species, we have to take into consideration their potential impacts on these water bodies. The overfishing and climate change, again, they are very, they have got the impact on these species also. Next. Impacts of river and ecosystem, I have talked about that. Next. So, what will be the sustainable management approaches? Integrated river basin management is very much required. We have to maintain these, minimal flow. It is very much required. Critical water level we have to maintain. Generally, what happens when a dam is constructed, downstream, the flow becomes very less, or river bed is completely dry, almost completely dry. So we have to ensure that minimal river flow it is maintained. When this river flow is maintained, it means fish diversity it will perpetuate and it will sustain. Next. Habitat restoration, fishing regulation, conservation breeding, community-based management. So these are some of the steps which we can take and this can ensure sustainable fisheries in this region. Next. Policy and monitoring needs, again it is required, stakeholder collaboration, balancing development and conservation. So these are some of the strategies which we can consider. Next. So in the end, I would like to say that northwestern Himalayas this particular region stores substantial amount of fisheries and opportunity they exist for sustainable development. So we have to integrate. Integration is very much required. Integration conservation it is essential. Protecting fish diversity means we are going for resilient aquatic ecosystem. So this is the need of our. Thank you very much. Any question regarding to this? You can ask. House is open for the questions. Please, any question? Maximum 2 questions will take. Okay. From there, there is one man. Gopalji, please provide the mic. Actually, it shows that how much patiently and how much, carefully you have listened the speech. Please, gentlemen, yes. Sir, you have presented very well. I have 2 questions from you. My first question is, what is the significance of your study? And second, what is the difference between the food safety and food security? We have to take only 2 questions, and this gentleman has asked these 2 questions. So you have asked about significance of my study. So actually, I don't know how much carefully you have listened to the topic itself. I have told you in the beginning itself that northwestern Himalayas is very important. It is one of the hotspots from biodiversity perspective. And fishes itself, they are very important. They are the indicators of water quality itself. And source of income for this employment itself. So they are very important from commercial perspective also. In my talk, I have told you about different
fish species which are imported from this particular region, and many among these species, they are commercially very important. And we know their distribution. Based on this study, I told you that what is their distribution and what are the areas which are for specific kind of species. And if we know about these species, their importance, commercial importance, accordingly we can go for their, we can go for aquaculture, we can culture these species, we can harvest these species, and accordingly it is good source of income. We can generate money. We can make money out of them also. So this is the answer of first question. And what is your next question? Sir, what is the difference between food safety and food security? Food safety and security, they are, I would say, both matters, they are interlinked. Safety and security. Food safety and security, they are related to sustainability itself. How we can ensure safety and security? In this particular perspective, with the connection to my talk, I have talked about fisheries. So how we can go for their safety? We can do this when we go for sustainable management. Sustainability is very much required. If we take good care of our aquatic resources, these rivers, streams, and we have got reservoirs also, then we can ensure safety as well as security. For that we have to take into consideration sustainability. Very much important for us, but sidewise we have to go for sustainability also. There are various factors. I have discussed various factors. These various factors, they somehow affect or they are challenging to these aquatic resources. So we ensure that these factors, they remain within permissible range or healthy range. If we keep them in the healthy range, then we can ensure safety as well as security of these aquatic resources as well as fishes also. You have to define the food safety and food security very simple and layman language. That is what I want from you. You are not layman. I think you are science student or something like that. So why you want to become layman? I want all of us to say that you can. art students as well. We are very short of time. What is that the thing that you can talk to me later on? भाई साहब जो सेफ है वही सिक्योर है That is what I want. तो आपको पता है सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट। आप जो बुरी किया उसको सिक्योर करके क्या करोगे? ठीक है ना, फूड का सबसे प्राइमरी सेफ्टी, उसका ब्लड प्रेशर है तो इट्स अ प्रॉब्लम। सो फूड मींस डायरेक्टली लिंक्ड विद योर हेल्थ और हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। आपको खाना वही खाता है। Then we will discuss in the session. Please, thank you very much, and thanks for your asking the question. That is very important question. That's why you want to keep आगे जाना सबके लिए धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your kind and valuable speech. You have told a very good different types of species about fish. And we are acknowledging everything what you have told on that. Now, it is the time to move forward with the first session of Young's English category oral presentation. And for that, I would like to invite for the session Professor Deepak Pathania, CU Jammu, and Professor Sunil Kumar from HP. Please come on live. आप please बैठेंगे. We are a spare chair here. Before I announce the first name in the young scientist category, I would like to request you, the researcher, that you will have to wind up your presentation within 5 to 7 minutes, including the questioning session. So please be strict on the time.
of all, I would like to call Miss Alka Online, research scholar, CUHP Thamsa. Miss Alka. I guess ma'am is not here. So moving forward, the next is Mr. Manish Malhotra, research scholar, Punjab University. Ladies and gentlemen, to encourage his research, give a big round of applause to Mr. Manish Malhotra. Thank you. And please be ready, Dr. Manish Thakur, Faculty of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, RS Pura. Please be ready. Please come forward and take your seat here. Please come forward. Your presentation has been already submitted by you. Okay. 5 to 7 minutes. Researcher, it is my humble request once again from you that please take 5 to 7 minutes to include everything, including the questionnaire. Thank you. Standing forth today and discussing the Sustainable Development Goals that started in 2015, and it has been a decade, and we are not able to solve an important problem, which is the Sustainable Development Goal number 4, which talks about digital inclusion in rural education to sustainable AI-driven online procurement. Over here, we will clearly state that a graph was shown that number of students from 1996 have been cheating in online examinations. This problem came into face in 2019 in a boom when COVID-19 came into place. The number of publications that you can see in the graph that is being portrayed over here, that the number of publications in Web of Science publications have increased drastically. 37% of the students have claimed that they are cheated in online examinations more as compared to offline examinations. And the market of online proctoring systems has increased at a large pace. A study was conducted where people are doing normal review. I went ahead and did literature review in the form of systematic and diplomatic review. We tried to find out that why students do cheating more in online exams, and then we have made my own model, which I will be discussing. So the students have portrayed down that. So over here, there were around 236 papers that were being analyzed over here, and that is the Prisma diagram which has been created over here. And what we came into face over here was that the students said that the performance of these systems that we are seeing at the moment are not at par. That is the reason the number of cheating cases are increasing. And when you talk about the rural students, that the girls have suggested that the video recording that is being done on this proctoring system, that is the major concern, that why they are not hindered towards these proctoring systems. And to do this study, we did not do a Google form. We have gone to Quora. Quora is a database. So from the Quora database, we have taken and analyzed the results, and we did systematic analysis with semantic analysis to understand what exactly their problems was. So here is the actual result of the study which has taken place. So this model has been created. In this model, we are not only checking the video feeds, we are also checking the students' past records. Many proctoring systems say that only seeing the movement of the student, seeing the voice of the student can detect cheating in online examinations. But this is not exactly the case. We need to see the past records of the student also. So we've gone ahead with machine learning algorithms. We did 3D case analysis on these proctoring systems and tried to understand the change point. What do I mean by change point? There are two folds. The first fold tells you that the student's past records, and if there is any huge hinder in this past record of the student, then only we are moving ahead and checking the records of the student's date, time, and the people that has been taking place in the proctoring systems. So the results over here have been portrayed on my faces. We are not taking into consideration due to the public anomalies. So this feature over here, you can see that the
my proposed model, after performing the YOLO and the past report, yielded around 88.6%, whereas the past studies were also nearby only. Also, 86.2 was also there, but there is a better chance and better possibility that the study is giving when we are taking into consideration not only the current scenario, but also the past scenario of the proctoring systems. So at the last, why this topic has been taken place and how it is related to the sustainable development goal is, this problem of examination is going to last a long time. Even during the war stage also, this problem came in place and put forward at the last part. So the sustainable development goal, has to understand it, our future scope is that we have to work on the data set. So the data set right now is very small, but later on the data set will be moving forward. The references that we have used over here are all of the latest IEEE references, and we pleased to announce that we have gone through this and published a part of it. This was part in the Web of Science scientific reports, and this second inauguration we will give a head towards agency. That's all for today. Any doubts, any questions, please? Question from audience. I have one question. How you have authenticated your results? What are the parameters? This study has been conducted on 260 Punjab University students. We were not able to do it in final exams. So we got permission to do it in the mid-semester examinations. To validate our results, what we have done was that the offline paper was conducted at the same level of the online examination. Your name? What is
second one, your name? From which university? Sir, as we know that medicinal plants are used since ancient times and they have very good medicinal potential. But there are still some plants which are scientifically underexplored species which is Mesospinal somnolens, and it is commonly known as bushmeat and also as lightning tulsi, as it gives some smell like mint plant. If we talk about its morphology, it's about 2 meter in height, and the leaves are arranged oppositely, and the flowers are bluish color. The seeds are oval or bit round, and this plant is native to America, and it is distributed as in tropical regions. It is used for various disorders in medicinal system traditionally. What are the results of your study? So, the results, as I examined the phytochemical composition of my plant, there were naturally terpenoids were present, which includes monoterpenes, pseudoterpene, diaterpene, triterpene, along with flavonoids and phenolics. The major compounds were... Yes, this is the review. And then you isolated? No, sir. No, sir, I just reviewed what these are isolated compounds from the plant. And because of this rich phytochemistry, there are the biological activities which are found in the plant. The first is antioxidant. Mineralic extract from the leaves show antioxidant activity by inhibiting 69% of free radicals. If we talk about antimicrobial activity, it shows antimicrobial activity against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Plasmodium, etc. And if we talk about anti-inflammatory activity, then there are 2 main compounds which are responsible for it. So, ketol and methyl sulfate, which are isolated from the leaves of the plant, and these are tested in the mouth scleroderma model, which reduces the swelling in the ear. And if we talk about anti-cancerous activity, the major compound involved in it is uracolic acid. It activates P53 pathway and it induces apoptosis in cancerous cells. And uracolic acid is also involved in antiviral activity against the most fatal virus, that is SARS-CoV-2, and also it exhibits cytotoxic and virucidal effect against rotavirus and chikungunya virus. And it also has anti-cluster diabetic activity. And because of these biological activities, then we think about the in vitro conservation of the plant, because we don't want to disturb the natural population. So there are 2 main techniques which are used successfully used in vitro conservation of the plant, are direct contact versus indirect. Indirect, we use explant like shoot, experimentally generated shoots in vitro, and were grown in MS media with MS media, along with PGRs like DAP, along with KNIA, NAA, KN. And the results show that multiple shoot regeneration was seen, along with 90% multiple shoot induction. The highest shoot number was seen 16.9 shoots per explant. And also the acclimatization was seen, which shows the complete regeneration. You have done the Sir, I have just reviewed it. So, have you done the outline of the paper? Sir, this is not experimental work. This is my review based. But you have methods in the... Yes, sir. Yes, I have. What is the pressure you find out of the water? Yes, sir. What is pH? The pressure of Check it. What is pH? Unnamed.
are the results of your study? हमने जो फील्ड सर्वे किया था वहाँ पे हमें हर्बेशियस प्लांट सबसे ज़्यादा मिले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ग्रो करते हुए एंड जो प्लांट पार्ट हमने यूज़ किए थे उनमें से हमें लीफ सबसे ज़्यादा मिले। वन ऑफ द रीजन इज दैट दे आर इन बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंड सेकंड रीजन है कि उनको हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं कब हमें फैमिली में हमें ऐसी फैमिली सबसे ज़्यादा देते हैं। You have collected these plants. Have you collected any tractor plant which is mentioned? Some of the plants, yes, sir. Which one? Mostly, Timbu was very best that area, and also Any other? and one more in that area. So what is the utilization of timber? How do you use it in reaction? सर वहाँ पे हमने अलग जैसे आप लोग जो कार्ड पार्ट यूज करते हो देखा लैंग्वेज भी यूज करते हैं एंड ऑल्सो स्टोरेज एंड करते हैं प्लांट से तो दैट हमने मेंशन किया एंड कुछ हमने मेंशन ऑल्सो क्या यूज करते हैं? जैसे तुलसी यूज करते हैं timber का plant. टिम्बरू को यूज करते हैं चटनी में डाइजेशन के लिए अच्छा होता है स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए अच्छा होता है एंड ऑल्सो ये बोलते हैं कि हमें अगर हीट जनरेट हो रही है हमारी बॉडी में तो मेरे एंटी होता है। और timber का कोई यूज करते हैं? सर बर्न्स में जैसे इन्फेक्शन वगैरह हमारे अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जैसे ट्रीट करने में हेल्प करती है। मेनली उन्होंने बोला कि हमें अगर डाइजेशन हमारा अच्छा करता है स्टमक डिसऑर्डर हिंदी में क्या होता है? हिंदी में पता करना। थर्ड वन What are your, I think you are just from intelligence, no? You are
So what are your plans? What will you do in PhD? How will you evaluate this study? Master's student, PhD, on the other business side, and also want to work on the digital level business. That's I want to basically. What is the combination of Jivamat? Jivamat is made up of 5 things, and all of these are important of farmers like this cow dung, this cow urine, pulse, flour, soil, and the rest of it. You can modify it. What will you do with PhD? I will form the other oxygen gases united research और उसके बाद में कोई और पेस्टिसाइड ले सकती हूँ जिसके जीवाणु के सारे जीवाणु तो सभी के जीवाणु में बहुत मसला है बायोलॉजी एक पेपर नहीं मिला है प्लस में काम करके This is comparative paper, but there must be some other related to Jivamat. लिटरेचर है पर फिर हमारे पास की एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है बायोलॉजिकल एनालिसिस हो गया फिर वर्क नहीं कर सकता और काम करके माइक्रोबियल एक्टिविटी So you can also look to the work related to all the different biofertilizers. Comparative work on different, but for the this pesticide will always be harmful for you. So they will usually use the agricultural. But you can compare the which one is the best biofertilizer. And come out with the result which one is the best one for the plant or other microorganisms. Ria, garden of endosciences. You are doing आपसे भी यार भाई आपसे भी यार भाई Distance and toxicity,
Minerva Jilla or Bajra is a power-based fertilizer, and the Minerva Jilla is kind of a liquid fertilizer that can be extracted from the fish. So instead of using the artificial synthetic pesticides, we use the beneficial insects such as lilies, and we can use them in there to get rid of pests. So I think also different techniques that are now being used for a modern agriculture, such as the zero budget national right now it is like advanced cultivation adopted. भाई तो फोटो वो कर देंगे तो वो नहीं आ रहे दोनों नहीं आ रहे Products that are found in the farms, like we use the ground as a fertilizer, and also we talk about the geometra and the geometra. Geometra which is used in seed coating techniques from the farmers. The geometra is used for enriching the soil with the beneficial microbes. Talking about the organic farming, they
अटक But after this conflict, I side 2 and side 3 saw imbalance. As you Which were these three sites? This is name of it. so this is Doji, and These are the downstream. This is road and this is Doji. distance between the road and It's around 5 minutes. And in these two was the answer. this is as we go to our what are the remedial measures? How will you correct this pollution which is taking place here? You want to close all the activities or some other? And the other one is agriculture. So the area around this river, where people do cultivation, crops, like pulses and vegetables. And one reason for the pollution is also the agricultural land. So we could place some boundaries around the river, which the runoff is development. How to dispose the agriculture? That is compulsory part of those people because that is the only source of income for them. So the waste is not the problem directly, but the pesticides and the other things which are placed in the water, that affects the People are using pesticides there also. So it is done everywhere, like pulses and the plant is in the water. You must also give the data whether they are using pesticides or not. You must take it to the chemical. And in this way we can stop them from using the pesticides and prevent the pollution. Is also as we know that this is a tourist attraction, people here for traveling, camping, and people from the lakes come to Indora for the views. So the people who come there as much more in the river, even the ship is also stopping to watch the flowers. I think it is some type of advice about it there. How to show the people from
daily value based changes to be various vector. So this is on scale. So what are the we have morphometric analysis? What will you do?
So basic information we as we have global warming is the important other challenges. And as more challenges balancing and electric, we have to adapt and enhance the environment and we have to use vehicles, electric vehicles, and all the set up and develop. Also, now we need to see highly salary management
to combat malnutrition and hunger, and it offers insights related for nutrition, science, public health, and technology. So I have concluded from my study that this dish is nutritionally very rich. It exhibits high protein and moisture content, but with low lipid levels. And the morphometric data shows that fish creates constant growth. It holds ecological, nutritional, and economic importance. Usually recommendations are conduct seasonal and large-scale studies to understand variations in morphometric and nutritional parameters, investigate detailed biochemical and fatty acids profile for added nutritional insights, to promote nutrition and product development to enhance economic benefits, and to encourage community-based fisheries management and awareness programs. I would like to thank my supervisor, Dr. my outfit for the science and the Department of Sciences for providing lab facilities, and Mr. Shanti for population and assistance. Can you give this ash test? What was the purpose of doing this ash test? I have not determined the difference which what will be the possible results that can be present? We were talking that this is a rich source of protein. Some is vegetarian. What is the alternative source for them? Okay, good.
the title of my presentation is the microbial degradation of plastic, a sustainable approach. As we know that plastic is a synthetic and semi-synthetic material which can be molded and cast into various form. And it is one of the extraordinary material which possess some remarkable property like elastic, water resistance, inexpensiveness, and etc. In earlier phases, this plastic was synthesized by using natural material like elastic property, which possess some elastic property like nitrocellulose, acrylite, etc. Now, this synthetic plastic came into existence about 100 years back, and it was synthesized by Magellan in 1907, and it was patented in 1909. Until 1950, there was very slow growth in plastic production rate, but afterward, a revolution has been observed in plastic production industries, as we know that this plastic gets accumulated in the environment and without degrading, it can survive for decades of the year. Next. Furthermore, during the production process of the plastic, number of plasticizers, additives, chemicals get added into the plastic to improve its property. But during its degradation, they get released into the environment, causing threat to the environment. Okay, now this plastic gets degraded into particulate plastic because of microbial degradation as well because of the ultraviolet radiation and result in the formation of microplastic as well as the nanoplastic. Next. Now, according to global scenario, world is generating about 359 million tons of the plastic waste every year. Next. And according to Indian scenario, India per capita plastic production rate is relatively very low as compared to global scenario, and it is about 8 kg per year. Next. These are the different types of the plastic which exist in the environment in different forms. As we know that, but the biodegradability rate of these type of plastic is very, very low. Next. Now these are the market percentage share shown by different type of the plastic, microplastic. As we can see easily that polyethylene is one of the microplastic which is showing maximum market share percentage. Next. Now this polyethylene causing harmful effect on the environment, including all type of the habitats in the ecosystem. Next. Now, these are the different type of the techniques which we can use for the degradation or for the management of the plastic. But among all these practices, we can microbial degradation is the best way. It is a neem treatment which does not produce any type of the secondary pollutant and causing any harm to the environment. So we know that what is biodegradation. So today we are going to discuss about the biodegradation of polyethylene. So biodegradation means the process by which microorganisms are used to degrade the plastic. In turn, they produce number of microorganisms which use those degraded material as a food material and food source. So there are number of species belong to family Bacillus, Lactobacillus, Streptomyces, and Micrococcus is meant for the degradation of the polyethylene. In the same way, there are number of species of the fungal which meant for the degradation of the degradation of the polyethylene. Next slide. Now these are the 4 steps which meant for the degradation of the plastic. One is it determined into 4 steps. One is the biodegradation, biofragmentation, assimilation, and mineral. Next. Now comes to the point that is the degradation of the plastic by using bacteria and fungi culture. Next. Now what we have to do, we have to collect the sample from the municipal dumping site from the depth of 15 to 20 centimeters. Next. Now we go for serial dilution. Now dilution reach up to the rate of 10⁻⁻⁹. Next one. Now the isolation of bacterial and fungal fungi from the soil. Next step.
The standard procedure was used for the isolation of bacteria and fungi needs. Now these are the different photographs of the seeded dilution and the culturing of the microbes in the lab. Next. Now morphological identification was done by using stain. For fungal it is lactophenol cotton glue, and for bacteria it is gram staining technique was used for the identification of the microbes. Next. Now these are the developed colonies of the fungal culture. Next one. Now these were the identified species of fungus which were used for the degradation of the polyethylene, and these were the Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus and Aspergillus niger. Next. Now next. These were the identified species of the bacteria which were used for the degradation of polyethylene, Bacillus thuringiensis, Mycobacterium luteum, and Pseudomonas spertica. Next. Now, how we have to complete the biodegradation? We have to keep the pre-treated plastic strip along with sterile culture media with known microorganisms, and 50 ml of nutrient broth was added into that culture, and it was incubated for 45 days at 37 degrees. And now the formula which is used for the percentage weight loss was initial weight loss minus final weight loss divided by initial weight and multiplied by 100. It is the formula which was used for the degradation or weight loss. Next. Now this is the result of our study. The percentage weight loss of polyethylene. It was recorded that maximum percentage weight loss was recorded for MB57, and it is Pseudomonas spertica, and it is about 22 minus 6. And in the same way for the fungal culture maximum percent. At different we have identified the weight loss at different by using different periods like acidic, neutral and basic. Now this is the graphical presentation. This graphical presentation shows that maximum percentage weight loss was recorded in fungal culture. Next. Now this is the percentage tensile strength loss for polyethylene, and it was recorded again for MB57, and that was 74.35 in bacterial culture and in bacterial 92.30, and it is for the Aspergillus spertica. Now this is the graphical presentation for the percentage tensile strength loss by using different type of bacterial culture. Now this is the normal FT-IR spectra image of polyethylene before treatment. Now see the normal place with different groups. Now see this is the treated polyethylene. Now lots of plates and the older plates get degraded. This confirmed the process of degradation of polyethylene. Now these are the SAM images of polyethylene. This is the normal SAM image with homogeneous surface without any penetration of microorganism into the surface of the polyethylene. Now see here, these are the images of different images of SAM of polyethylene. Now see number of holes abrasion because of the penetration of the microorganism into the surface of the polymer. Clear? Now we can make the use of these techniques for the degradation of the plastic waste or municipal waste, and we can genetically modify these culture also to get the pure or more result, efficient result for this. This is all about my presentation. Thank you very much. Yeah, so discuss last
you, sir. Thank you, ma'am. And my special thanks to Patania, sir. Sir, मैं का वीडियो भी बना रहे तो आपसे इशारा भी कर रहे थे जल्दी करो. Thank you very much, sir. Now I would like to call our next participant, Dr. Priyanka Chopra. Shrimati Raman Chopra, SDKMB, Pathankot. Ma'am, please be restricted with time. Thank you. Okay, so I think time is very क्या है? 5 minutes. So 5 to 7 minutes. 5 minutes. Yeah, maximum 7 and 5. 5 minutes and 2 minutes of questions. Yeah, yes. 5 minutes. A very good afternoon to all. As they all know that the planet Earth is the only planet where water is available and life is possible. And that's why water is an elixir of life. And what elixir of life, but what we did with this elixir? रोज हम लोग इस elixir को टॉक्सिसिटी के साथ भर रहे हैं. And ये जितना भी हमारा कॉकटेल है इस नेक्स्ट है. अब वाटर जितना भी है जो हम बात करते हैं वाटर इज रिलीविंग फ्रॉम द पूरा अर्थ से हमारा पानी खत्म हो रहा है. ये सब पॉसिबल नहीं है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल मैटर एंड एनर्जी व्हिच कैन नॉट बी conserved or destroy or we cannot be create or destroy anything from this planet. So water cannot be depleted. But what we are doing depleting potable water. That is water which we are drinking. तो जितना भी पानी अवेलेबल है हमारे पास that is not able to drink. Actually we are depleting potable water. That is the necessity for a human being. तो पानी पीना जरूरी नहीं है, but what we are drinking that is important. और आज जो हम पानी पी रहे हैं that is next slide. That is a cocktail of toxic element. It's a toxic cocktail. But we टाइटल अलग है. Yes, sir. Next coming. This is just introduction. I am coming to next my title. Technical. Yes. I think this is just an introduction about water. Okay. I am coming to the technical session. That is my topic is seasonal variations of in this water quality that we are drinking from hand pumps. And we have selected the Boulevard area in the Hoshiarpur district for the shallow aquifer test. Shallow aquifer means water which we are drinking through hand pump that comes from the shallow aquifer, not from deep water. Mostly hand pumps are from shallow aquifers. And the shallow aquifers are mostly deteriorated with the anthropogenic factors, that is fertilizers, dumping sites. All these factors are responsible for this deterioration of water quality. And secondly, the most important is geological factor. Geology of that area is also an important factor for this water quality. And see what are the seasonal variations in this quality, because in dry season the quality is different, and for the rainy season the quality of these shallow water aquifers are different. So we have tested for the testing there are so many criteria to check the quality of water, like physical methods, chemical methods and biological methods, but we have taken 5 physico-chemical parameters that are pH, EC, hardness, chloride and sulfate, which are the major quality factors for check the quality of the water. And for this area we have selected 7 sites. 7 sites, and routine check of qualitative and quantitative analysis is done for these water samples, which have been taken from the 7 sites of Boulevard town that is present in the Hoshiarpur district. Next slide, please. Now, what we get in the results? We get this abnormalities in the result, and in dry season the results are different, and for the rainy season the results are different. Now, this increased pH during rainy season due to the fact because most of this area, Boulevard area is a country area, and Ganga where is present, this dolomite and this calcite
electrolytes are mostly present in that layer, and then water percolates through these layers. During dry season, they give the other readings, and in the rainy season, the readings are different because when water percolates, the dissociation of the conker layer in rainy season releases alkaline substances. And some abnormalities are seen because of this anthropogenic. This is the geological factor. Because layers are present and we are getting the alkaline water there because pH gets high. But during rainy season, some percolation increases because of the dilution of the water, and during this percolation, some anthropogenic factors are responsible for this high pH. Next, please. No, back. Next. Back. One side back. These are the general standard values. Actually, how we correlate these values and hardness is beyond limit or within the limit. We have the permissible standards given by the different countries and agencies which are giving standard values for the drinking water. That this limit is permissible for the consumption of human being. But there is also a problem in this because every country or agency given in some different value, that is the different work. I am not going to discuss here. But here is also a problem in these standard values. We have taken the mean standard values for this study. Next please. Now next is hardness. High bicarbonate concentration formed when rainwater percolates and reacts with carbon dioxide in the soil. Because these are the geological factors. We can't change these factors. This is the geology of that area. But often this leads to the temporary increase in hardness during the rainy season. 1 minute left. 1 minute. Okay, so next thing. Now next is chloride. This is also temperature and low water table cause high rate of evaporation, due to which there is a combination of salts. And during rainy season it dilutes and percolates inside the rocks. Next thing. Next is sulfate. Now this is the basic reason for increase in sulfate in our test because most of the sites we have selected is agricultural land. And most of the fertilizer used in that agricultural lands are the sulfide rich. Because of that, anthropogenic reason is one of the main important reasons in this site for this increased value of these water quality parameters. Next please. Next is electrical conductivity. It is conventionally high in the dry season and decreases during the rainy season, but in this area abnormalities are seen due to the weathering of the soil and the start of agricultural activities. Next please. Now, concurrently many spikes and deviations are seen in the values of physicochemical parameters due to excessive use of fertilizers and presence of dumping site affecting the value of sulfide and chloride present in the groundwater. Values obtained for pH, hardness and electrical conductivity also show abnormalities, but these are because of the bicarbonate and carbonate present in the layers of the alluvial soil present in that area. Conker layer in the soil, excessive runoff in rainy season that leach the minerals into the shallow aquifer, which results in increase of concentration of calcium and magnesium. One of the main reasons is also that there are the riverlets or the shores present in that region, which mostly contribute this water quality. At last, I will conclude that not only the anthropogenic, geological and anthropogenic plus seasonal variation all affect the groundwater quality, and in the area where this water quality degrades, we have to check the quality. Thank you so much. Any questions, sir? One question. Yes, sir. इसमें तो बहुत ज़्यादा चली थी because actually level पर चली थी 10 के आसपास चली थी 10 पर 91 it may be a 10 not beyond 10 it's bad it pH back 19 is maybe wrong, sir. It may be 10 के आसपास ही maximum रहेगा. 10 21 something. Thank you. Thank you. Thank you, madam. 9 10.45 10 10.
Thank you very much, madam. Now I would like to call our next faculty member for the oral presentation, Dr. Rajiv Guria. Dr. Rajiv Guria. Okay, moving on. Miss Shreya Thakur. Research scholar, Chandigarh University. Dear faculty members and research scholars, please keep in mind about the time limit. It is a 5 to 7 minutes maximum. And in that 7 minutes, the questionnaire will also be included. 5 minutes for your presentation and 2 for the questionnaire session. So try to wind up in 5 minutes only. Thank you. Good afternoon, my name is and my dear ones. So today I am going to present my presentation on the topic aquaculture in a changing climate, the emerging fields and the adaptive responses. Next slide. So basically, the introduction, the aquaculture is basically the farming of the fishes as aquatic organisms. It plays a crucial role in ensuring the food security, in supporting the livelihood, and it also provides the employment, and this helps in reducing the pressure on the wild population, which contributes to the global economy as well. And besides its benefits, the climate change, fishes are very vulnerable to the climate change. And the next slide. So next slide. So how the objectives. So I'm the CPHD scholar, the first year I will do it. So these are my tentative objectives, how will I will be performing. So for the to evaluating effects of the elevated temperature and pH by using certain kinds of the acids and buffers and thermostates, I will be calculating the responses in the fishes. Secondly, I am also finding the endocrine disruption in the fishes, which is basically caused by the bisphenol, which we need as the plastics, like you can see in the riverines, which are very close to the industries. The discharge of the plastics, how it is causing the effects on the fishes, and evaluating the histological alteration by finding what are the ultra-structural changes in the fishes, in the gonads and the liver of the fishes, and biological change that also can be oxidative stress responses. And also using the CRISPR-Cas9 as a genetic engineering technology to modify the genes which are responsible for the stresses in the fishes. Next. So these are the xenobiotic, how the metabolism of fishes are basically the various metabolic pathways are there. But if the exposure of the chemicals is too much in the fishes, so this is overwhelmed, and this leads to the bioaccumulation in the fish's tissues, like we can see the organs, like the liver, gonads, and also the adipose tissues in the fishes. Next. And oxidative stress is basically seen in the fishes, in which the imbalance between the reactive oxygen species and the antioxidant responses imbalance. And this basically leads to the cellular dysfunction in the fishes, which can be the lipids, can damage the membrane permeability, the proteins denaturation can happen, and bacterial mutation can also be seen. Next slide. Yeah, so how the temperature is affecting, like how is it causing the endocrine
house is open for the question. Any questions? Sir, these are actually my tentative objectives. I just made it portable, how to do it, and I'll just perform it by next month. Yes, sir. Actually, I have done the hematological analysis in which I have treated my fish with one of the chemicals, and I see the changes in the liver and the gonadal, tissues of the fishes. Like I'm basically working on one fish which is found in the Himalayas. Sir, observation I have seen that there in the gills, I have also tested the gills, in which I have seen that laminar fusion is also seen, and in the liver hepatocyte regulation is also seen in my results. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, basically I'm working on rainbow trout. Yeah, actually it is very sensitive to the climate change as well. So I am just... Sir, I am from Barod. Sir, actually I'm from Dharamshala, but I live in Chandigarh. So this experiment I'm performing at home only. I find certain kind of the jailers and videos as well. Peter, I don't need. Yes, sir. Sir, basically I have only introduced my which channel I am using. I have only calculated their results. Till now I have not done this climate change factor right now. Yes. Yes, but I am yeah. You have presented your future. Yes. Thank you. Yeah. Thank you very much. Now I would like to call Miss Diksha Pathania, research scholar, Army University. Okay, moving on. Mr. Purushottam Lal. Mr. Purushottam Lal, research scholar, Guru Nanak Dev University, Amritsar. Then Mr. Gunshin Kumar, research scholar. Okay. Moving forward, Mr. Amit Kumar, research scholar at Jalandhar. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the research scholar, Mr. Amit Kumar. In the category, the next will be Miss Anchal Mehta. If she is available, be ready. Good afternoon, everybody. I will present presentation on the topic cycle groups as the mediators of insect conservation and agro-sustainability. So many professors, students, everyone talking about how we are making the sustainable planet. But my topic, going back to back, according to us in our Vedas, on the sacred groups, which are related with the sacred plants, and we did study going in the area of the Veda block in Chamba district of Himachal Pradesh. Now, first of all, introduction about these. What are the sacred groups? Sacred groups are those areas which are protected by the persons by the fear only. Where we are going to read, this is our one of the line of Sundarkanda. In Sundarkanda, we have the fear, then we love. To everyone, here also we are having the fear, then we are coming in contact with each other. No, this sacred group is also one of the fear, which is protecting us. By fear, we have fear about our crops, our domestic animals, not we who are doing just in the village. I am studying, there I am studying. There is the name of the deity, like the temple, Jyoti Mata temple. These temples are made near the trees, and trees are those which are sacred. And sacred means we have the full devotee on the jungle, on the forest area, and that area is away from the pollution. Okay. Now, this away from the pollution. Here I am collecting the insect on the about which are safe of that area, and this area with the insects
They are pollinated mostly. Herbivores, they are making the contact with the conserving the environment nearby the agriculture area. So my topic is coming toward the essential objectives we see second group with the insect conservation and eco-sustainability and socio-cultural dimensions, all about our nature. So we have to make a sustainable environment. So many studies have overall the second groups which are linked with the insect conservation and our eco-sustainability, which are beneficial to us. So we have first of all saved our sector plants. And these sector plants are making our work just like the sector plants are worked by the pollinators. They go toward our crop pollination for the flowers and which are making the sector plant, vegetable plant, fruit, vegetable, and as the crops, which are providing us everything for the food. For the villagers, most villagers are doing the work for the sector work and others are going for the pollution. So these all study area, just like the picture we can see. So villagers are living near the sector areas and sector areas are giving them the life, survival, healthy life. So we have to work and we have to go down toward these works, how much work I have done that integrated with the sector groups and the agriculture area, where we have got large number of the insects which are making the pollination with the agriculture area and they are surviving us. So next we are just like these so many insects I have collected and according to the ratio that I have collected also next like this pollination, herbivores, etc. area activities which are at the daytime and the night time. All the activities I have observed there in the sector areas and in the agriculture areas. According to these results I have got, we have to first of all to come to the sector areas which we have to protect. Either we are protecting only one tree, just like people in your areas, in the high areas, there are the deltas. And the road and don't like these are the devotee. For these, just like the results we can see, just like the results we can see, the insect are the more business in the area of the sector groups. So sector groups we have to make the second plant survive, save the make the time, the threat. We have to save that plant. That's the plant will save the whole insect and all insects will save to you. Your agriculture field has been done. So that's my conclusion. I am saying that sector groups in the mega block of Tumba district are not merely cultural beliefs, but a functional ecological assets. Functional ecological assets means that they are conserving the insect diversity also and sustaining agriculture also. So their integration and integration into the conservation and sustainability studies are essential for achieving the biodiversity and food security goals. Just like when you are asking about the food security and food safety. Food security that which are securing to other from us from others. Food safety we are saying that. Insects are food security which are getting to us. So we have to understand everything clearly. The large of all by reading traditionally, ecological knowledge with the modern level science and sector groups as well as the models of the community and conservation in India as well as the world. So we have to come to our tradition. First we have to keep the tradition first, then afterward we will go to our sustainable culinary trends. Wow. Any questions? Yes. If any question in anyone. What is the difference in these sectors? You have any other areas? That's why I am working there. So for my studies, one is the nearby my goal, near about the more than 308 trees, man are temple, one is in somebody is man a block. Yes. I connected with you also. I see again the exact same you asked that. How old that sector? People say that here ancestral brought a man up and but here and that trees are there of that temple. Old trees are those more than weight also. And like these growing on the temple, I will say that is the whole pattern. Trees are there.
all area have those butterfly trees up about near 3,000 meters above the sea level. So that height we need to go on the foot 8 hours. Means we have to reach there, that area, we have to go on the foot on a near about 8 hours. So that's why that area has only a comparative data. Yes, I just compare it. I have wait and I have to discuss with you afterward also. That all collected, I have collected questions. Okay. Thank you very much. Now moving forward, I would like to call Ms. Kanchan Mehta, research scholar at Minerva. Moving forward, Ms. Lata Kumari, research scholar at SPU Mandi. Moving forward, our next participant is Ms. Seema Kangu, research scholar, CPU Harinpur. Okay. Moving forward, next is Dr. Nitesh Kumar, faculty, SPU Shimla. So last one is Dr. Ramendra Prasad, faculty, Angel College of. Okay, sir, thank you. So this is all with. Now we are having a special speaker, and we requested that he will take only 5 minutes for saying something. So I would like to call Sardar Jagmohan Singh Gill, Director Lok Kalyan Samiti, Amritsar. Please put your hands together for Sardar Jagmohan Singh Gill. Thank you, sir. कल से और आज सुबह से बहुत ज्ञान की बातें आपके बीच में रखी गई, बहुत बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आए, मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा और मुझे मौका मिला मेरे लिए। और नेक्स्ट टाइम हम तो सिर्फ थोड़ा सा जितना प्रैक्टिकल हम कर पाए उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे से एफर्ट्स हैं, देख लीजिए हमने क्या क्या किए हैं। तो हम जो मानते हैं कि पंजाबी में कहते हैं कि कॉमन गुरु पानी पिता माता तत्वहार, सबको पता है मतलब उसका, सबको पता है पिछले बार कॉमन गुरु पानी पिता माता तत्वहार, तो ये हमारे पुराण में लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से हम इसको धर्म के साथ पेश करके पब्लिक के बीच में लेके गए और उस रिस्पॉन्स को अच्छा मिला, और जितना हम काम कर पाए वो आपको दिखाने जाते हैं, थोड़ा सा आगे ले जाइए। तो सर गुरदासपुर तरनतारन के 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया है। तो बेसिकली आगे नेक्स्ट इस ये बताने की जरूरत नहीं है, पानी एक इशू है, पानी पंजाब में पानी कम हो रहा है और पानी पोल्यूटेड हो रहा है, 2 तरह का इशू है, ठीक है। तो कितना है पानी, ये सब लोग साइंटिस्ट बैठे हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वो एक जग के माफी हम देख सकते हैं कि पूरे समुद्र में जग या बाल्टी के बराबर वो पानी है, आगे ले जाएगी। और पंजाब में जो स्टडी है ये पुरानी स्टडी है, वैसे 17 लाख ट्यूबवेल थे, लेकिन अभी जो है वो लगभग 27 लाख के आसपास, 26-27 लाख के आसपास जो है वो ट्यूबवेल है पंजाब में, और जो इलीगल चल रहे हैं उसका इसमें हिसाब नहीं है। तो 140 ब्लॉक है पंजाब में, 140 में से 108 ब्लॉक है डार्क जोन है, बहुत थोड़े ग्रे जोन और अपना वाइट जोन बचे हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमने जो हम गांव में जो पुराने छप्पर थे गांव थे तो उन पर बेसिकली कब्जा हो गया, लोग कब्जा कर रहे हैं राजनीति की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, उसकी वजह से लोग कब्जा कर रहे हैं। तो वो लैंड जो है वो जो रिचार्ज के रास्ते हैं वो सारे हमने बंद कर दिए हैं, और डिस्चार्ज के रास्ते जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपको पता है कितना सारा बैलेंस है कि डिस्चार्ज बढ़ रहा है और रिचार्ज कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो समस्याएं पंजाब में आ रही हैं तो 108 लोग जो है डार्क जोन हो गए हैं, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है आगे क्या क्या हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि इसको अपने थोड़ा धर्म के साथ पेश करने की कोशिश की। जो नानशेरी के साथ जो पुराने किले बने होते हैं उसके जो साथ जो बने होते हैं तालाब है वो हमने पहले आइडेंटिफाई किए हैं। तो लगभग
24 के करीब तालाब है 3 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमने कम्युनिटी बेस्ड उनके साथ डिस्कशन करके लोगों के साथ, ये गोबा ने का तालाब है, ये तहसील का तालाब है, आगे ये बुद्धर का तालाब है, आगे ये रनी के है, आगे मनी के है आगे। तो ऐसे उनका तो पूरा पुराने ट्रेडिशन बने हुए हैं। ये गौ घाट है, इसमें जानवर उतर के पानी पी के वापस जा सकता है, और ओवरफ्लो का एंट्री का, और फिर हमने लोगों को साथ लेकर वो मुहिम शहीद के छप्पर बचाओ मुहिम उसको बोलते पंजाबी में, तो कंजर्वेशन के लिए हमने वो जो जी गाँव एंट्री में थी तो उसमें जाकर हमने काम किया और लोगों के साथ कार सेवा करके वहाँ पर आसपास प्लांटेशन करवाई। और नेचुरल तरीके से जो पानी आता है, नहर का पानी है या बरसात का पानी है, वही उसमें भरना है, और ट्यूबवेल से नहीं डालना है। तो ये हमने अपना इस एरिया में काम किया। तो ये आफ्टर जो नहर का पानी लगाया उसके बाद ये पानी खड़ा हो रहा है, वो पानी खराब करा रहे हैं। नेक्स्ट, और हमने देखा कि पॉन्ड है जिस पर लोग कब्जे हो रहे हैं, तो उसको भी हमने हाईलाइट किया है, आरटीआई के जरिए हमने डाल के इन्फॉर्मेशन निकाली और लोगों को हमने एक्सपोज भी किया है आगे ले जाइए। और ये गवर्नमेंट का खुद का एनफोर्समेंट है पॉन्ड में, दिख रहे हैं आसपास सारा बॉर्डर और वहाँ तक बिल्डिंग उसकी आगे। ये राजेदार का तालाब है, ये 219 एकड़ पर जो कब्जे हुए हैं, तो उसको थोड़ा अपने मीडिया में देखेंगे, और अलग अलग ब्लॉक्स में जो जमीन पर कब्जे किए हुए जो पहुंच गई, तो हमने डिस्क्लोज किया उनके नाम। तो ये हमें बस अपनी तरफ से एक बार थैंक यू। Thank you very much, sir. Undoubtedly, your NGO is doing very good job. And if we all do the same, then we can save the environment. And as our chairman and all other dignitaries said, we need to change our mind. It is not to need to change the environment. If we change our mind, our environment automatically sustains. So thank you very much. It is all about this section. Now we will move on with a valedictory very shortly. Thank you. So, from the rise, I would heartfelt extend my word of thanks to the section chair and co-session chair that you have spent a valuable time for us, sir. And now we are waiting for your judgment. So as soon as you will provide your judgment to us, we will move on with the next one. Thank you. सर की हाथ
हटा दो सी देखी nhảy trên nó ô nha देखी trên này Valeria Pixelia poi ini jaga tuh So now, we are on the final step, or the last section of this two-day national conference mandatory session. Moving forward, I would like to call on dais Organizing Secretary Dr. Indu Thakur for the conference report. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Organizing Secretary for the conference report.
Thank you. Thank you, sir. A very warm good afternoon to respected chief guests, distinguished dignitaries, esteemed speakers, delegates, faculty members, and dear participants. It gives me immense pleasure and privilege as the organizing secretary to present the report of the two-day national conference on sustainable planet, 21st century opportunities and challenges, organized by Minerva PG College of Arts, Science and Commerce in collaboration with the IMScience College Association on 27 and 28 April 2026. The conference was organized with the objective of creating a common academic platform for delegation on environmental challenges, sustainable development, and innovative solutions for better future. We are pleased to share that the conference received an encouraging response from academicians, researchers, and students from across the country. A total of 135 abstracts were received under the oral and poster presentation categories from participants representing various universities, colleges, and research institutions from different parts of India. The conference also witnessed the active participation of around 230 delegates and participants, which making this event academically vibrant and successful. So the conference commenced on 27th April 2026 with a dignified inaugural session in the gracious presence of eminent dignitaries. The program began with Saraswati Vandana and Vande Mataram, followed by a welcome address, presidential remarks, and inspiring addresses by our distinguished guests. The release of the conference souvenir and book further added significance to the occasion. During the 2 days, the conference featured keynote lectures and invited talks by the renowned experts from different institutions. The delegations focused on important themes such as climate change, biodiversity conservation, environmental pollution, sustainable agriculture, forest management, tourism and ecology, and traditional approaches to sustainable living. A number of technical sessions were conducted successfully, comprising oral and poster. These sessions provided an excellent opportunity for researchers, research scholars, and students to present their work, exchange ideas, and interact with the experts in their respective fields. The Chopra Award Ceremony for meritorious students and the Best Model Award Ceremony were among the special attractions of the conference, encouraging academic excellence, creativity, and innovations among young minds. The cultural program organized on the first day added color and enthusiasm to the event and beautifully showcased our cultural heritage. Today, we conclude this conference after 2 days of fruitful academic discussions, learning, and meaningful interactions. On this occasion, I express my heartfelt gratitude to all the dignitaries, keynote speakers, invited speakers, session chairs and co-chairs, delegates, participants, and students for their valuable presence and contribution to the success of this conference. With these words, I conclude the conference report and once again, thank you everyone for making this event truly successful. Thank you. Thank you very much. Now I would like to call and the President of for his valuable words and for the address. Please, ladies and gentlemen, because of the sir, it is only possible that we have arranged this wonderful 2-day national conference. So please give a big round of applause to Professor Pradhan. Thank you. Thank you, sir. So, respected Professor Professor Chairman of the organization, other member of the IMScience College Associations, scholar from different part of the country, dear students. So, really, it is a matter of pride
for HSC as well as for the Minerva College that we are jointly organized conference successfully. We have seen that during the curriculum session, only some people have during the council, but there about 100 people telling which will connect the success of this conference. So the cadets goes to the young dynamic principal of the college, very intellectual and dedicated Prasad. So his efforts have this milestone in the history of this college. So I saw that in near future